Good afternoon, Naveen sir. Hello. Sir, I think your mic is muted. You can unmute your mic and then speak. Now, am I audible now, Gaurav? Sir, you are audible now. Yes, sir. Yes. So, good afternoon, students. For the post-lunch session, we have Dr. Naveen Chauhan with us. Sir is an associate professor at Luminescence Physics and Application Group, Atomic Molecular and Optical Physics Division at Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Sir will be talking about research facilities available at the Physical Research Laboratory at Ahmedabad. Sir, you can share your screen and start the presentation, please. Okay. Thank you. So I will be sharing my entire screen here. Is it visible? Yes, sir, it is visible now. Okay. Is it okay? Slides are Sir, visible? so you can change the slides one or two so that we can know that it is working fine. Yes, sir, it is working fine. Okay. Absolutely, sir. So should I start now? Yes, sir, you can start your presentation, sir. Yes. Okay, Hope, thank you. actually, first of all, I would like to thank Gaurav to invite me for this lecture, and also thank Dutch University for giving me this opportunity to interact with the students over there. I guess most of the students are from different backgrounds, so I try to see whether I can accommodate all the people in my presentation, and I can say that how our laboratory can be useful for all the people over there. In case there is a question, we can take in between also if somebody has question, or maybe in the end as per your protocol. So how I planned this presentation is something like, wait a moment, let me select the pointer. So how I planned this presentation is something like, I would like to first provide the glimpses of some research and the facilities which are available in physical research laboratory. And as you know that PRL has several branches and working in is associated under the working under Department of Space Science, Department of Space. Okay, and its main motive is to cater to the needs of space sciences of the India, different missions which ISRO is sending, and what are the facilities. Whatever facilities and the research, they are oriented in a way that it can cater to the future and the present space research related demands of India. Basically, this is the building of the PRL. This is the admin block, and it used to be the first. Earlier, it used to be the research wing, but now it's admin block, and this is the main building of the PRL. As you must be aware, the PRL is established by Professor Vikram Sarabhai. And I will do first, what I will do, I will take you through the history how the PRL is established and how PRL groomed over the time. And at present, since several divisions of the PRL are there, and each are working in different dimensions, so it will be very difficult to consolidate all the things together. But how I will give it's like I will first give you the introduction of the division. In each division, what are the facilities and what kind of research are being done, I will introduce to you to that, and then you can see the facilities or the different type of instruments which are available with each division. In fact, I may not be able to cover all the instruments because each lab is having so many instruments, and they are not like information is available to not available to everyone. So I will try to focus on the major instruments which are there and which can be useful for the students over there in your university. So basically, as I told you, it was established somewhere in 1947 by Professor Vikram Sarabhai. Everything started from his home. The name of his home is The Retreat. It's still there in Ahmedabad. So this is the home where this physical research laboratory started initially. After that, within the same year, it moved to MG Science College. And then soon, the concept of physical research laboratory came into the picture. And the foundation stone of at present, whatever building you are seeing, the foundation stone of that was laid by Professor C.V. Raman there in 1952. The laboratory building was completed in 1954, and it was inaugurated by the Prime Minister Jawaharlal Nehru at that time.
You can see that Professor Kalam is working on some of his research project with Vikram Sarabhai. So he was the student here, and he did his PhD. He worked here, and all the rocket related studies which he started begin here in the PR. Now in the PRL, we have established several scientific milestones as it progressed over the time. So initially in 1950, since Professor Sarabhai was a cosmic ray expert, he used to work in in research related to cosmic rays. So in 1950s, initially the cosmic rays and research started in the atmospheric sciences by him in the PR. Then afterwards, soon after it, the theoretical physics division started working radio physics and other parts. In 1970s, somewhere, Earth and planetary sciences are introduced here. After that, in 1980s, particle physics came into the existence, and along with the solar physics. Then in 1990s, laser physics, quantum optics, nonlinear dynamics, and computational physics, astroparticle physics, and cosmology. This particular group came into the existence. And 2000 onwards, like several works related to quantum information, solar X-ray astronomy, submillimeter astronomy, and planetary exploration is going on. So these are some of the scientific milestones in the PRL. Now, this is PRL logo. Okay, so you can see something is there. Some of you may be aware about this logo. So basically, this particular is a symbol of a sun. Okay, this symbol is a symbol of sun with a dot in the center, and this is a symbol of Earth. And this, in a way, represent both are a system, and they are angled in the radiation field. And this symbol somewhere matches with the infinity. So the basic concept of PRL is, you can read in Hindi that PRL के अनुसंधान क्षेत्र में समाविष्ट है पृथ्वी एवं सूर्य जो निम्नलिखित है चुंबकीय क्षेत्र एवं विकिरण में अनंत से अनंत तक जिन्हें प्रकट कर सकती है मानव की जिज्ञासा एवं विचार शक्ति. And if you read it in English, it's like PRL research encompasses the Earth, the Sun, immersed in the fields and the radiations, reaching from and to infinity, all that man's curiosity and intellect can reveal. So this is the main objective with which PRL also works. So we are working on towards the Earth, understanding the Earth science, Earth and Sun system, and the radiation fields which are associated with the Earth-Sun system. So these are the different campuses of the PRL. Obviously, this is Professor Vikram Sarabhai. This statue is in main campus at present, also in the Thaltej campus. So this is the main PRL building. So main campus is in the Navrangpura campus, which was first established. And this is the building which looks from the front. Then another campus in the Ahmedabad is Thaltej campus. There are also like several labs and several divisions which are working in this particular center. Then we have a Udaipur Solar Observatory, where mainly solar related research is done, and Mount Abu Observatory, where mainly the telescopes which are used for the nighttime sky viewing and studies related to it. Now coming to the science at the PRL, we have like several divisions. So as I already said, that PRL consists of several divisions which are contributing to different domains of space science research. So the first one is like theoretical physics division. We have geosciences division, planetary sciences division, astronomy and astrophysics, solar physics, space and atmospheric sciences, atomic, molecular and optical physics division. These are the divisions. These are the main divisions or the research areas in which PRL are working. Besides this, we have a strong students and the postdoctoral fellow program, JRF and PDF programs. And at a time, you can say around 100 students are there in PRL, which are conducting research in different areas or different science domains. Okay. So I will try to discuss all of these divisions, try to introduce all of you to each division individually, and
try to give you the glimpse what type of work or what which people are associated with what type of work in these divisions, and then what are the facilities available with each of these divisions. Okay, so let's move first to the atomic, molecular, and optical physics. This is the division in which I am also a part. So basically, the name itself suggests that it's working mainly in the atomic, molecular, and optical physics. We are trying to understand the atoms, molecules, crystals, and then try to use light to probe these different atoms and try to understand the natural phenomena and observe the natural phenomena, try to understand the processes which are associated at atomic and the crystal levels, and then trying to come up with several new physics and new research ideas. So we have an optics optics group in this division, which works which uses lasers and works in the quantum optics and quantum cryptography. In this, people are mainly involved working in quantum entanglement, quantum information, quantum sensing related stuffs, and they are trying to use quantum for the future space missions. Like one of the important aspect right now is secure information transfer. So, and we know that right now quantum is the future, and government of India also announced a huge grant for quantum information and technology. So this group is particularly trying to work in that direction. Then we have a atomic and molecular physics group, in which actually we are trying to understand the behavior of the atoms and the molecules, and trying to, in a way, you can say, we are trying to make a video or of molecules at a very short time scale. So what are the reaction processes which are actually happening in at a very small time scale of the order of femtosecond and ottoseconds. So at that small time scale, what we can do is we can actually see how the reactions are happening. What are the processes which are happening during when a reaction is molecular or atomic reaction is taking place. So we can actually visualize, and we are trying to control the reactions in the direction of the reaction. You can say we can control the probability with which a particular end product of a reaction is produced. So this type of work is done in atomic, molecular, and optical physics division. There is another this group, and this is another astrochemistry group. In this group, what we are trying to do is like we are trying to simulate the means space environment in the lab. Here we are conducting the experiments at very low temperature and at very low pressures, and we are trying to understand how space and in space molecules and the reaction, different type of molecules have evolved, how the biochemical reactions taken place in the space, how the new means how even at such a low temperature how new products are forming, how dust particles are forming. So and using this, we are like in this particular domain, we are simulating the temperature from very small, like a few Kelvin order to 6,000, 7,000 degrees Celsius order, so that we can also understand when a meteorite impact is happening. Obviously, we know the temperature is rising significantly in this case. So what type of reaction is actually taking place when such a huge impact and such a huge temperature rises? So in this lab particularly, we are trying to simulate the astronomical conditions or the space condition, where even the small temperature, low pressure, low temperature environment is there, and very high temperature environment is there. So we are trying to work in this. Then luminescence physics and application group. This is the group in which I am working, and this is my group which I am currently leading. In this, we are trying to understand the luminescence properties of the crystal and trying to understand how the luminescence properties of the crystal is changing with time, and what are the laboratory experiments which can change the luminescence properties. We are applying it for radiation dosimetry estimation, and also applying it for the dating, geological dating. We are trying to use it for understanding the
impact of the radiation, space radiation, alpha, beta, gamma radiation on the crystal properties, and also trying to understand how geology has changed in the past, and how the paleoclimate has evolved, how evolution of the human has taken place. So we can estimate the chronology, like radiocarbon dating. We can estimate the ages of the different sediments, and we can associate it with different processes which are taking place. So we have tried to understand such kind of work in our lab. Now let's move to the different type of the research and the people which are associated. So the group is led by right now by the Professor R.P. Singh. His main area of research is quantum information sciences, quantum optics, nonlinear optics, orbital angular momentum states of the light. So he tried to understand the orbital angular momentum using the laser, vortex beams, and other several important phenomena. Then we have a Professor B.K. Sahu, who is mainly trying to do he's a theoretical physicist. So he's trying to theoretically study the different candidates for atomic clock. So he simulate the many body problem in his simulations and try to suggest different candidates which can be used for the atomic clocks in the future space missions. Then we have Professor G.K. Samanta, who mainly works in non-linear optics and optical parameter oscillators, try to develop new sensors using the optical properties of the crystals. He's also working in structured optical beams and terahertz radiation and quantum entanglement studies. He is also involved in developing new instruments for the space communications. Then we have recently we are joined by Dr. Shashi Prabhakar, who is also working in the higher dimension entanglement application and long distance quantum communication studies, and he will be carrying out his work in this domain. Then we have Professor Bhala Shivaraman. He mainly works in experimental low temperature astrochemistry. And the ways I already suggest you how the astrochemistry group is working. So all those works are done under the leadership of Professor B. Sivaraman. Then myself, who I'm working, as I told, in luminescence dosimetry and luminescence dating, and trying to understand the radiation impact on the crystals properties and the luminescence properties, and also trying to use the luminescence dating for studying the geological and archaeological processes, archaeological evolution. Then we have Dr. Rajesh Kushwaha, who is trying to probe the ultra-fast dynamical processes in the atoms and molecular systems. So he is also mainly working in the experimental physics and trying to simulate the different reaction and try to control the reaction at very small time scales, like femtosecond 10 to the power minus 15 and attosecond 10 to the power minus 8 seconds. So they are conducting, means this is one of the class facility in India. No such lab is there which can surpass this lab right now. Okay. Then Dr. Prashant Kumar has developed his own instrument for laser-induced background spectroscopy, and trying to use this for studying the different processes, plasma processes. What are that? He is using this laser-induced background spectroscopy for determination of the elemental concentration and trying to improve this technique so that he can use it further for very low or the trace element concentration estimation for the space missions. Then recently we are joined by Dr. Satyendra Nath Gupta. He has just started his work. So he will be mainly working in quantum dots and also using the Raman scattering and fabrication of some new instruments which are related to the quantum dots and quantum information applications. Okay. So coming to the laboratories which are there, as I already told. So we have an astrochemistry laboratory. There are different types of instruments. So they investigate the low temperature chemistry, dust impacts, and the shock waves in this laboratory. They have a shock tube in which they can hit a target of the whatever chemical you put. They generate a target with a huge speed and very high max speeds, and that results in creation of new
molecules, new molecules which they can expect in the space. And several of their works have appeared in like the front page cover of the journal. So this is a excellent laboratory which is working from 8 Kelvin to 16,000. I was earlier I said so 6,000. No, it's 8,000 to 16,000 they are working. Kelvin they are working. And it right now it's the only lab in India that is pursuing this particular astrochemistry work. So this is a really marvelous facility which is there in the PRL. Already I told you we have a femtosecond laser lab performing atomic molecular experiment in very femtosecond and to auto picosecond, femtosecond, and attosecond time order. And these ultra fast dynamic processes allows us to control the reaction rates in the different directions. So if we suppose a reaction can generate 2-3 different products, we can vary the parameters, and we using those parameters, by varying those parameters, we can force the reaction to proceed in a particular direction. And you can understand that this can be how much this can be useful for the like medicine industry, chemical industry, wherever like reactions are involved. We can generate we can increase the efficiency of a generation of a particular product if we know we can control these reactions. So this is a fantastic lab and only of its kind in India right now working in this direction. Then we have luminescence physics and application group, which I am heading. This is the first and the best equipped lab of luminescence laboratory in the India right now. There are around 10 to 12 laboratories which are already, means whoever is heading those laboratories, all those received training in this particular lab only under the guidance of Professor Singhvi. And this lab was established somewhere in 1970s, and till that date, they have worked enormously in the like all the deserts of the world. We are the pioneering laboratory which worked in the desert evolution. We are working in the meteorite studies. You can say we are also working on how the mountains are uplifting, the uplift rate of the mountain, determination of uplift rate of the mountain, or even in the Kutch with the Gaurav over there. We have worked on several aspects. This lab has worked on several aspects and trying to study different paleoclimate and geology related processes. Then we have photonic science laboratory, where we study the interaction of structured beams with the nonlinear crystal. We generate different type of nonlinear beams and try to understand which beam is suitable to study a particular property of a matter. Currently we are involved mainly in the quantum communication. So what type of beam we should develop which can send the signal without much deterioration, and we can establish a communication link which is super secure, as well as which is like modified to very less extent. The information is very less modulated. So such a type of activities are done in photonic science laboratory of PRL. Then again, the quantum science and technology laboratory, which is working quantum entanglement, quantum sensing, and quantum meteorology. So they are working on the optical vortex beams. To give you an idea, vortex means bhavar. Bhavar means something is rotating. So they can trap the particle in that, and we can play with small particles of nanometer order and use for different activities. So this laboratory is, and also they are working in quantum sensing and obviously quantum communication. And this is one of the best lab right now in the country for quantum experiment related studies. If anyone is interested in the studies of this group, you can go to this link, and they can you can go to the PRL and then you can search for AMO PhD division. You can get the details of all the people working over there in this group. Now, these are some of the AMOPH instruments and the capabilities. You can see there are huge number of instruments which are there with the group. And even these are some of them I may not be able to list because I'm not aware of those instruments. But these are the major instruments which are there, and you can say the ones which are highlighted here, they are very high-end instruments which are not available or available in very small numbers in the country.
And these are very unique instruments, and if somebody want to use these instruments, they can. So we have femtosecond fiber lasers, we have Nikon inverted research microscope, Eclipse TI, we have high purity germanium and scintillation detector, which can be used for estimating very low concentration of radioactivity in the soil. We have magnetic separators, which can separate the minerals based on their magnetic properties. FTIR spectrometer, which can study the different OH bonding, how water molecules and different bonds. Then we have laser produced plasma spectrometers. We can study the plasma properties there. Then cluster source and time of flight mass spectrometer, recoil ion momentum spectrometer. We can measure the momentum of the particles here and differentiate there. And we have like thermoluminescence and OSL dating laboratories. Besides this, we have developed several unique methods, which are like relativistic many body methods. These are like theoretical physics related studies where you can study very heavy ion atoms, which can be used for the atomic clock. So atomic many body methods are developed by our PRL people. And magic wavelength for the optical clocks. We can suggest the optical wavelengths which can be useful for the optical clocks. Then we are working on the plasma spectroscopy using the LIBS we have developed over. We have single grain IR, GSL and IRSL dating systems. Also several endo-horizon EMCCD cameras which can be used for single photon counting, which has a capability of counting even a single photon. So these are some of the instruments which are there with the AMOPH. I hope this some of you may be interested in visiting PRL at some time and visiting these labs. Now I move on to the Geosciences division. So basic objective of Geosciences division is to understand the origin and evolution of the planet Earth, to study its various components and try to understand how, at what time scale these processes are happening. How the climate is changing. They are involved in climate related stuffs. They are trying to understand the ocean geochemistry or the lake geochemistry. They are trying to understand how the mountains are evolving. So this is also a very dynamic division of our physical research laboratory. In this, these are some of the professors and the doctors which are working. These are the faculties. So Professor J.S. Ray is well known. He works in solid earth studies. Professor R.D. Deshpande mainly works in isotope hydrology and trying to understand how the isotopes vary in the water collected from different parts of the India, and he's running a very big project right now. Professor Sanjeev Kumar is there, who is trying to study the aquatic and terrestrial biogeochemistry. He's interested in the lake environments there. Then Dr. A.K. Sudhir is there, who studies the trace elements in the oceans. And Professor Neeraj Rastogi, who is involved in aerosol chemistry and try to characterize and associate with the climate change some of the aerosol properties of and how the concentration of aerosol is varying over the time, and what are the factors which influence these aerosols. Then we have Dr. Arvind Singh, who is working on ocean biogeochemistry and the climate change. He tried to understand how is the health of the ocean, and what type of what is the impact of global warming and thermohaline circulation, ocean circulation is posing, how the things are changing in the ocean there, and how it is linked to the climate change. Then we have Dr. Amjad Hussain Laskar, whose main work is related to radiocarbon dating, climate change, and soil biogeochemistry. He's he is also having very good record of work, a good number of papers under his belt, and he has done a fantastic work. Then we have Dr. Vineet Goswami, who is working on continental weathering and erosion and oxygenation of the earth. In this, he is using he is expert of samarium, neodymium isotopes, systematics, then rubidium, strontium systematics, and also
or like working on the TIMS thermal ionization mass spectrometers and trying to understand how continental withering is taking place, what are the hotspots of withering, and how chemistry is changing and how it is impacting the climate change in the, like, he's working in Himalayas and he's also working in the oceans. So he's also a very dynamic fellow. Then we are joined by Dr. Yogita Kadla. She's working, means she tried to understand the early Earth evolution and try to understand the different type of trace elements which are there, and try to understand how in the past Earth has evolved from when Earth was initially molten and then became solid, then how it evolved during this process. She also has some work related to the planetary sciences in the past. Then we have Dr. Shubhra Sharma, who is working on geomorphology, luminescence dating, glacial evolution, floods, and the paleoclimate. So she's trying to understand the floods how the flood during her PhD. She worked on how the floods has taken place, what's the frequency of the floods, and what's the impact of the flood, what is the level of the floods. Then she is currently working in Ladakh region and the Kutch. She has also worked in the Kutch region. She is doing paleoclimatic studies and the tectonic related stuff. She's also studying the glacial evolutions over the past. So she's involved in several different type of projects, right? And she often visits Kutch University. So in that way, you can interact with her there also. Then these are some of the laboratories of GSO Sciences Division. We have Accelerator Mass Spectroscopic Laboratory. So this is the one of its kind in country. So there are only two AMS facilities in the country. One is with IUAC in Delhi, which is having a beam energy of 500 keVs, I think. And we are the one in the PRL which we are having. We have an energy of 1 MeV. Which means it can accelerate to this, and we can accelerate the beam to this high energy, which helps in differentiation of the beryllium and the aluminum. So this has a higher resolution compared to the other AMS facilities which are there, and it has application in glaciology, planetary sciences, archaeology, paleoclimate studies. Then people are using it for the oceanography also, hydrology, other areas involving application of the radioisotope. So we can do carbon-14 dating and some cosmogenic isotope studies, which are like aluminum-26 and beryllium-10, which are there. So we can study these and we can find the cosmic ray exposure ages, as well as carbon-14 ages, which can be useful for different type of activities which are listed here. Then associated with this laboratory is graphitization laboratory, where we can generate very high purity graphite samples and prepare samples for the AMS dating. And it can handle both the organic as well as inorganic samples. It can be coupled this is coupled with the carbonate handling system for inorganic and elemental analyzer for the organic samples. Then we have a IRMS facility, which IRMS means isotopic ratio mass spectrometer laboratory, which can be useful for stable isotope measurements. So we can study the stable isotope, since the stable isotope concentration is linked to the climate change and paleoclimate studies. So we can study how the climate has evolved in the time. We can study these. We can estimate the temperature changes, or how the relative temperatures has changed in the past. So we can use these different isotopes to study different type of biogeochemical reactions which are taking place. So it has application for geochemistry like paleoclimatology, oceanography, and hydrology. So it can also trace the pathways of different processes. So it is used for studying the Earth surface process and the climates also. Then we have aerosol chemistry laboratory. The laboratory is mainly used for study of the linked with the aerosols, and what they do, they go to different part of the countries, try to collect the aerosol and try to estimate the health of the whatever weather or what are the conditions there, health of the atmosphere there.
and they have established the aerosol oxidative potential for the first time in India. So this is also a well-equipped lab which is and having a lot of facilities for aerosol-related studies. Then we have a sorter flow cytometer laboratory and used to analyze the marine microbial phytoplankton and bacterial cells. So for studying the phytoplanktons and the small living cells in the ocean, we use this, and this provides a method for sorting the heterogeneous mixture of microbial cell and one cell at a time. So we can separate the cells in this particular instrument, different microbial cells. So that much is the resolution of this. So besides these laboratories which I discussed, there are several other laboratories which are there with the geosciences division, which I can show you that there are several instruments which are available with them, and maybe you can get more details on this particular website. These are some of the instruments which are available with the geosciences laboratory, and most of them you can say like they are like very expensive and high-end instruments which are available and working almost 24/7. So we have like accelerator mass spectrometer, multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometer, quadruple inductively coupled plasma mass spectrometer, QICP-MS we say. Then we have TIMS, thermal ionization mass spectrometer, IRMS, which I already discussed. We have gas chromatography mass spectrometer, which is used generally with the aerosol studies. Then we have ion chromatographs, and we have alpha, beta, and gamma detectors, which are used for estimation of the radioactivity in the aerosols, also in the soil. Then we have liquid scintillation detectors, which is used for radiocarbon dating in the past. Then we have inductively coupled plasma atomic emission spectrometer, ICP-AES. Then CN analyzer for stable isotope studies. Then thermal optical EC analyzer, sulfur dioxide, carbon. Several analyzers are there. Then we have a portable visible spectrometer with liquid waveguide capillary cells. Other spectrometer like atomic absorption, TOC analyzer, which are at some point of time was developed within the in-house. Right now, I think it's a procured one, but initially we have developed this instrument within PRL. Then we have time of flight mass spectrometer, which is also used for aerosol mass, means aerosol concentration estimation. Then we have accelerometer. Next division is related to the planetary science division. I think this is the biggest division of our PRL physical research laboratory and is involved in mainly planetary science division is a interdisciplinary division. It has people from physics, from geology, from chemistry, from they are thinking to recruit people from theoretical physics. They have the people, in fact, from theoretical physics background, and some people are thinking to recruit some geology related, biology related people in this. So they are working, since the requirement of this division is multidimensional. When you are studying the space sciences, you need everyone from all the branches of the science. You need to understand the physics of the star formation. You need to understand what are the type of the minerals on different planetary bodies, what are the different how the cosmic rays are interacting, how solar plasma is interacting. So different type of people build up this division, and it's one of the most diverse division of PRL. So, and they are working like in solar system objects. They are working studying the solar system object, their atmosphere, trying to understand the surfaces and the interior of different planetary bodies, and the processes which are governing these using the planetary exploration missions. They are also working on the laboratory experiment, doing the theoretical and the numerical modeling and computer simulation to simulate different type of environments of the planetary bodies. Giving you the details of this division, we have Professor Varun Sheel, who is heading this division, and he's working mainly in the planetary atmosphere, mainly in the Mars. Then we have Professor D. Banerjee, who is working on thermoluminescence and planetary physics,
and trying to apply it for dosimetric aspects in the for the space mission. So he's our senior from our lab only and working on luminescence aspects. Again, then the Professor Kuljit is there, Kuljit Kaur Mahas. She's working, trying to understand the early evolution of the solar system. She's working on pre-solar grains, trying to understand how the nucleosynthesis, how different nucleuses have formed, different type of elements have formed. So she's working on nucleosynthesis, stellar evolution. She's also working on the meteorites and trying to predict how the different planetary bodies has evolved in the past. Then we have Jayesh Pabari, who is working on interplanetary dust, and he's trying to understand what are the elemental, what is the elemental concentration of what type of the interplanetary dust exists, how they are interacting. Then he's trying to understand the planetary lightning. He's also developing some of the instruments for the space missions and working on the wireless communication. Then we have Dr. Amit Basu Sabdadikari. He's working on the planetary geochemistry, trying to understand the different processes on the surface of Moon and the Mars. And he's also involved in different interesting projects related to the evolution and the remote sensing project. He's collaborating with the other guys and trying to understand how the things have evolved in the past on different planetary bodies. Then we have Dr. D.K. Panda. He's working on planetary geochemistry, meteorite, and early evolution of the solar system. We have Kingshuk Acharya, who is mainly working on theoretical modeling related to the astrochemistry, how the different molecules have formed in the past, and what are the what are the cross sections for formation of, or the reaction pathways for formation of different molecules, and what are the conditions needed for the formation of different type of astro molecules. So he's working on that aspect. Then we have Dr. Neeraj Srivastava, who is working mainly in the planetary remote sensing. He has he's a very known worker on. He has published several papers on remote sensing aspects of lunar surfaces, and also working on the Martian surfaces. But he's well known for his work on lunar surfaces. Then we have Dwijesh Ray, who is working on Earth and planetary materials and planetary geology. He's trying to understand the he's trying to study the planetary materials which are or the minerals which are available on different planets, and then trying to correlate with the minerals which are available on the Earth surface, and trying to study the processes or the how those minerals have evolved in the past on a given surface. His work is mainly related to the Mars and the Moon geology right now. Then we have Sanjay K. Mishra, who is mainly working, who is a theoretical physicist, and he does the theoretical works and try to simulate the plasma kinetics on different planets. And he tried to understand how the plasma density is changing in different planets, how the cosmic rays or the solar energetic particles are affecting the plasma densities on different planets. Then we have Dr. Durga Prasad, who is basically an instrumentation expert. He develops an instrument for different space missions of the ISRO also, and he has developed some interesting instruments in the past, which were also part of the space missions in Chandrayaan 3 also and Chandrayaan 1 also. Then we have Dr. S. Vijayan, who is working on planetary remote sensing. He's mainly working on different aspect of the geological aspect and trying to understand the geology of the planetary bodies using the remote sense by observing the remote images of those objects in different emission bands, and try to understand predict the formation and the generation of those minerals on different planets. And we have Dr. Megha Upendra Bhatt, who is also a planetary, who is also working on remote sensing. She's working right now in lunar surfaces and trying to understand the Mare and other region, Mare basalt and the other region, and their formation and the interior, how the interior of the moon looks like. So she is also quite active in different planetary exploration. These are some of the laboratories of the Planetary Science Division. So as I said, it's a strong group which is concentrating on modeling, instrumentation, and data analysis. We have a planetary atmospheric science laboratory,
which deals with modeling, instrumentation, and data analysis for planetary lighting and the atmosphere of the different planets. They have done studies for the planet like Mars and the Venus, and for a future upcoming mission, Venus mission also, they are playing a major role in this and trying to do some studies related to it so that they can predict what are the things to be done on the Venus for the Venus mission. We have X-ray diffraction machine instrument which can be used for the crystalline, for predicting the crystalline phases of various materials and the quantitative phase analysis. Using this, we can predict what type of crystal is there, what is the mineralogy of the crystal. So it is normally used for meteorite geosciences and solid state physics studies. Even I use it for use several times for predicting my minerals. So most of the physics people and other people must have heard about the X-ray diffraction which is there, and this is the instrument which this group is having. So we have already, I told you, we have the laboratory which deals with the interplanetary dust science, and they try to do the modeling, instrumentation, and data analysis for the interplanetary dust sciences. And they study the dust environment, dusty plasma, and dust devils, and atmospheric dust in different planetary bodies. We have a noble gas mass spectrometer. As you know, the noble gases are the signature of a planetary body. So if we know the composition of the noble gas in some meteorite or in some sample, we can predict from which planetary bodies this must have came. Also, it can be used for estimation of the cosmogenic exposure ranges. So this particular laboratory deals with such stuff. So they study the meteorites. They try to estimate the cosmic ray exposure ranges, trying to identify the parent body which is there, and also characterize the meteorites which are received by the physical research laboratory. Then we have a nanosims laboratory which can this laboratory is headed by Kuljit, who is working on past solar system evolution, early solar system evolution. So they can study a nano-sized particle in this laboratory, and they can try to predict the composition of the nano-sized particle and different type of isotopes which are present, and they can then correlate it with the means evolution of that particular dust grain. And since the dust grain is obviously linked to some planetary body, indirectly we can predict, okay, how that planetary body has evolved in the past. So we can estimate the cosmogenic exposure ranges of such particles. So this is the only system of its kind in the country right now, I will say. Then we have XRF, X-ray fluorescence spectrometer, where we can estimate the elemental quantification of different planetary material. We can estimate what type of elements are present in these materials. Okay, so it measures what it does. It gives an X-rays, and whatever fluorescence is coming out of that, they are the characteristic fluorescence. Characteristic lines. So we compare that lines against the non-standard, and we can predict what are the elements which are present in this material. Then other important equipment which we are having is electron microprobe analyzer. So it is again used to predict elemental trace element concentration. So elements which are present in ppm or ppb level, we can estimate the concentration of those elements using EPMA, and it's work mainly on the wavelength dispersive technique, and we can predict very low elemental concentration with a very high resolution using this instruments. Normally, XRF we can use for major element, and EPMA we can use for the trace element also. Then we have laser ablation LAICPMS. So in this, obviously we can estimate the elemental concern, mass. We can use it for the mass spectrometry, and we can estimate the isotopic ratios of different elements using this instrument. Now, coming to the payload development, as I already told, this group, Ph.D. group, is
involved in payload development in other along with other divisions of the PRL. They have developed moon mineralogy map. They have an instrument like moon mineralogy mapper on Chandrayaan-1, and they are able to detect the hydroxyl group on the using this instrument, which gave the first indication of the water present on the moon. Okay. They have developed instruments for ISRO missions like Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, Aditya-L1, and also working on some of the instruments for future Mars and Venus mission. So these are some list of some of the instruments which are developed by this group. High energy X-rays, obviously for predicting the elemental concentration, then alpha particle X-rays, then solar X-ray monitor. Chaste is the interesting instrument which was there on Chandrayaan-3, and you must have seen the temperature profile within the moon surface. So it can predict the temperature profile in the moon. It could predict the temperature profile within the moon surface up to 10 centimeter. So they, done by this particular instrument. So we had on the Aditya mission, we have the Aditya solar wind particle experiment, which can predict the particles which are received by the instrument, like hydrogen and protons, which are helium particles which are received by the instrument. They can predict that particle and measure the concentration of those. Then we have gamma ray. They have developed gamma ray spectrometers in the past. Then interdigitated transducer dust detector. So they are working on the dust detector right now. Then impact ionization dust detectors, lightning detectors they have developed. Then radio occultation experiment also they have done. Then retarding potential analyzer. This is again a Langmuir probe which is used for atmospheric studies, and this was also there on board on the Chandrayaan-3. Then neutral mass and ion mass spectrometer and energetic ion mass spectrometer, which are being developed by the group. Excuse me, let me have some water. So the next group is astrochemistry, astronomy and astrophysics division. So basically, astronomy and astrophysics division is involved in the theoretical as well as the observational things. They try to observe the nighttime sky. They are the ones who are involved in who discovers new planet, try to study the different galaxies, star formations, and different planetary bodies which are there. They study the dust clouds and supernova, nova experiment. This kind of study is conducted by the group. This is the image of the Mount Abu Observatory, which we call MIRO. This is a mid-infrared observatory. I will come to it, and most of them are mainly in the Thaltej campus of the PRL, working from Thaltej campus of PRL. So this is the interior view of the telescopes. I will come to it, and this is the nighttime sky, how it so compiled nighttime sky, which is there. Coming to the faculties in this division, we have Professor A. Chakrabarti, who is the division head and working mainly in the astronomy and the astrophysics. Then Professor Santosh Wadhwale, who is working on high energy astrophysics and related instrumentation. So he has developed instruments continuously for several like space observations, related observation. Then we have Professor Sachindra Naik, who is working on high energy astrophysics and astronomy, and also infrared astronomy. We have Professor Ganesh, who is working in astronomy, astrophysics. Then Avik Sarkar is basically a theoretical astrophysicist who is working in magneto-hydrodynamic simulation and trying to understand the solar physics in this. Then we have Mudit Srivastava, who is mainly working on observation and instrumentation development for astronomical, optical, and infrared astronomy. Then we have Viresh Singh, who is trying to understand the active galactic nuclei and galactic evolution. We have Dr. Lokesh Kumar Devangan, who is working on the mainly on the massive star formation, multi-wavelength studies, galactic star formation, Ming region, which are there. And so they basically is trying to understand
in which parts, which are the main star forming regions in the space. He's also doing the polarization study of star forming region and relating it to the processes which may be taking place in such regions. Then we have Dr. Arvind Singh Rajpurohit, who is working on very low mass stars, which are called M dwarfs, and also on the brown dwarf, and trying to understand the dynamics of these stars which are there. Then we have Dr. Vishal Joshi. He's working on near infrared and optical studies of nova, supernova, and transients, and automated analysis in the astronomy. We are joined by Dr. Sunil Chandra, who did his PhD from PRL only, and then came back as a faculty in the PRL, and he's working on galactic astronomy. So he's trying to observe different type of galaxies in the space. Then we have Dr. Manas Samal, who is also a theoretical physicist, and who is trying to study the massive star and the young cluster, and how they are forming, how they are evolving, what are the different feedback mechanisms which are responsible for star formation, and they're also working on associated interstellar media. Coming to the facilities, obviously, since these are astronomy division, the major facility for them is Mount Abu Infrared Observatory, which we also call MIRO. This observatory is located on the top of the Guru Shikhar. If somebody had a time to go to Mount Abu, and if you go to a temple which is there on the top peak of the Guru Shikhar, you can see that observatory from that temple. If possible, you can visit this laboratory also if you want to. Then this laboratory was established in 1979 and is obviously located on the highest peak of Aravalli Mountain. Why this particular observatory is located at this particular site? Because you get 220 observable night with very reasonable view. Okay, so that's the main reason why we should locate the observatory in this location, because you get a clear, you need for nighttime observation, you need clear sky. There should not be any disturbances from the city lights or other climatic factors. So this is located in a remote location, and also you get a clear sky for about 220 nights. So the observations can be taken almost continuously. Okay, the whole observatory means this observatory was designed indigenously, and right now it has 4 telescopes, which I will discuss, along with several back-end instruments which are used for astronomical observations. And obviously they are used for studies such as solar system objects, exoplanet detections, star formation, stellar structure, evolution, nova, binary systems, supernova explosions, starburst, and active galactic nuclei. So recently you must have seen in the newspapers that some exoplanets are discovered by the PRL. So this is from this laboratory only which we have discovered. So this is the daytime view, and this is how it looks like, horizon looks like this observer. Now, as I told you, it has around 4 telescopes. So the biggest one in this laboratory is around 2.5 meter telescope. It has an objective of 2.5 meter. This is the newly established and recently is started working. And this is the second largest in India. So the first largest is in Aries, Day-7 telescope. And after that, this is the second largest in India. So it is like a design is such that it has a hyperbolic concave primary mirror and a hyperbolic convex secondary mirror, and it has size of the primary mirror has a size of 2.5 meter, which is supported over 42 axial and 18 peripheral actuators. Now the focal plane is around 2.1 meter behind the vertex of the M1. So it has basically 3 main ports. One is the direct port for viewing. Another 2 ports are on the sideways. So at a time we can connect 3 instruments to this port. Okay. So it has the direct port has a field of view of about 25 arc minute.
while the side ports have a field of view of about 10 arc minute on both the sides. So we can connect to different instruments on the side ports and do the observation whichever are needed using this telescope. Another telescope is 1.2 meter. This was the first installed telescope in this particular observatory. So 1.2 meter was first installed in 1994 in this observatory. And it was designed and built indigenously by Shar Center of the ISRO. The telescope is on a fork mounted equatorial. So you can see this fork is there. So it is mounted on this fork point. And it is capable of doing sidereal, non-sidereal rate tracking for observing fast-moving objects like comets. So you can use it for comets and asteroid-related studies. And it can be also connected to several other instruments for spectral analysis. Another one is a 50 centimeter automated telescope for variable studies. The best part of this telescope is it is like automated robotic telescope. We can handle it remotely from PRL, like anywhere in the PRL network. I'm sitting in PRL Laboratory, Ahmedabad, and I can control the functioning of this microscope or this telescope from the Ahmedabad laboratory itself. The objective is 50 centimeter and is one of the several telescopes operated by this, obviously. Then it is connected with an EMCCD based imager, and the total field of view is 13.3 multiplied by 13.3 arc minute. And it can be also be operated with back-end instrument like other telescopes. The instruments which can be connected to it like bolt with cloud sensor, so it can sense the cloud, so it can automatically sense the cloud and shut down. All the sky cameras, shutter drive and control system, and dome drive and control auxiliary system, which are coordinating the robotic operation. So it is, as I told, it is automated robotic telescope. So it can detect different parameters and can safeguard itself in case of an emergency. Then we have a 43 centimeter telescope. Mainly, it's a very small telescope which is used for, like, if we have detected some exoplanets, then we do the follow-up observation using this telescope. And this is equipped with standard Bessel BVRI filters, and also has a low sensitivity of the order of 1 to 2 millimag in differential photometry. Now, the main thrust of these is the back-end instruments. Main thrust of all these telescopes is the back-end instrument, which are operating with these telescopes, which can be connected to these instruments. So we have a PARAS-1. PARAS-1 is it's a PRL Advanced Radial Velocity Abu Sky Cell. So it is for the radial velocity estimation, and how whatever output is coming from the telescope, it is fed through an optical fiber to the PARAS system. Then it has a wavelength resolution of 380 to 950 nanometer, and has a resolution, significantly high resolution, 67,000. Resolution is 67,000. So basically, we can use it for a variety of studies, and since we can do it for spectral analysis, whatever light is received from different stars, we can do the spectral analysis in this particular range, and when we can predict what is the major emission happening from these particular stars, what could be the elemental concentration from these stars or any cloud, or whatever star formation region is there, whatever is understand, we can do the spectral analysis of these. So important thing is it maintains the stable condition of temperature with the precision of 0.01 to 0.02 degrees Celsius, and at a temperature of 25.55 degrees Celsius, 55 degrees Celsius. It is enclosed in a vacuum vessel at 55 millibar, 0.3 to 0.03 millibar, and it has a peak efficiency at around in region 5,000 to 6,500 angstrom. So this is the instrument. Then we have recently developed PARAS-2 for specifically for the 2.5 meter telescope. So it is one of its kind. It is one of the best, it has the highest resolution spectrograph in Asia.
So within Asia, this has the highest resolution in the not only in the country but throughout the Asia. So it is again, it has a range of operation in 380 to 690 nanometer wave band and has a resolution of 107,000. It, again, for this particular aspect, we need very high, ultra stable temperature in the pressure environment. So we have a maintained temperature at 24 plus minus 0.001 degrees Celsius and a pressure of 0.005 plus minus 0.0005 millibar respectively. So, and its calibration is done with the uranium argon halo cathode lab, and it's really highly stable and a useful instrument for spectral analysis, which are for the lights which is received from the stars. Then we have Mount Abu Faint Object Spectrograph and camera, also called Pathfinder, MFOSCP. This was fully developed by in-house by the PRL at the Guru Shikhar laboratory. Its field of view is 5.2 into 5.2 arc-minute, and wavelength ranges from 450 to 850 nanometer. It has a 3 different gratings, so like 500 with the lines with the resolution of 500, 1000 and 2000. It can be used for spectroscopic analysis, and it can be coupled to either with a 1.2 or 2.5 meter telescopes. And it is used for the, as I said, several faculties are interested in M dwarf and brown dwarfs. So they are doing their observation in M dwarf, supernova, nova and symbiotic systems, intra-night variability of astrogalactic nuclei, active galactic nuclei, photometric studies of X-ray binaries, and other similar studies it is used. Then we have some 2-3 more instruments which are related to the PRL for polarization measurement, PRL optical polarimeter, and it was also developed in-house. This is the instrument. The polarimeter has been used for polarization observation and has capability to measure polarization as low as 0.01%. Another spectroscope is LISA. It is also it's a low resolution spectroscope which has a resolution of 1000 only, and it is used generally with the 1.2 meter telescope and the 50 centimeter telescope, and is dedicatedly for the weak spectroscopy of the weak objects such as comets, nova, supernova, because it's easier to couple with these systems and fast to move. And it operates in near UV and optical wavelength ranging from 375 to 700 nanometers. Then we have EMCCD based optical polarimeter, which can be coupled to the 1.2 meter telescope and is developed in-house. So this is the instrument which is coupled with the 1.2 meter telescope right now, and it has a nearly 0% instrumental polarization. So it can be maintained at 0% instrumental, and it has a field of view of 3 by 3 arc-minutes. Besides this, there are several EMCCD, CCDs, and other spectrographs which are available. Also, they have in their Miro laboratory observatory, we have a liquid nitrogen plant and a glass polishing setup, which can be used to design or take care of the existing lenses and the different components of the optics which are there in the telescope. Most of the maintenance is done in-house by the PRL staff only. So we don't call outside staff for cleaning and other polishing kind of stuff for these optical components. Another very dynamic division is Space Atmospheric Sciences division of the PRL. Again, the space, since as the name suggests, it is interested mainly in the space and atmospheric atmosphere of the Earth as well as the other planetary bodies. So they are doing the ground-based experiments, performing the balloon experiments, doing the theoretical modeling and numerical modeling, conducting the laboratory experiments, and trying to predict how the atmosphere of the Earth is changing, and also trying to understand in some cases how the planetary atmosphere is changing.
So they conduct a lot of experiment related to the Earth atmosphere, stratosphere, ionosphere, troposphere, different layers they are studying and trying to predict the health of the atmosphere and the different processes, like what type of plasma exists there, what are the different, how the cosmic ray is interacting with the Earth atmosphere, and how we can they are also studying in the clouds formation. So they are contributing a lot in the day-to-day life of the people also. So this is also a dynamic division also presently work. The division has contributed for the payload development of Aditya mission also, as well as working for the future Disha mission also. This is the group. So Professor D. Pallam Raju is right now the Dean of the PRL. He's the part of this division, and he's upper atmospheric, studying upper atmospheric dynamics, space weather, vertical coupling of the atmosphere. Professor S. Ramchandran is working in aerosol, radiochemistry, and the climatic interaction. How the aerosols are, mass loading is there. He's trying to estimate in the aerosols in different parts of the world and comparing the aerosols in different parts of the world and relating it with the health effect as well as the climate change which is happening right now. Professor Dibyendu is again is related in the space weather and solar wind, impact of the solar wind on the Earth as well as the planetary body atmosphere. He works on he tried to simulate the magnetosphere, ionosphere, and the thermosphere also. Then Professor L.K. Sahu, Lokesh Kumar Sahu works on trace gases, volatile organic compounds, and the photochemistry. Professor Shom Sharma is working on the lower and middle atmospheric dynamics and atmospheric cooling processes, long-term atmospheric changes. He works on the LIDAR and other related instruments. Then we have Dr. Haresh Gadvi, who is mainly working on numerical simulation, and he is trying to study the biomass burning aerosols which are contributed by the biomass burning, fossil fuel burning, and trying to and its impact on the air quality and the climate. So it has direct implication to the human survival. Then we have Dr. R.P. Singh, who is working on mesospheric lower thermosphere coupling and the dynamics. We have T.R. Rajesh, who is working on atmospheric aerosols, their variation in spatially and temporally, and what are the source which are contributing to these aerosols, and it impacts on the different processes as well as the climate change. Then we have Amitwa Guhare, who is working on wave dynamic processes in middle and the lower atmosphere. He's mainly doing theoretical modeling and use the standard data sets. Then we have K. Venkatesh, who works on upper atmospheric physics, ionospheric thermospheric interaction, and ionospheric empirical modeling. Then we have Dr. Narendra Ojha, who mainly work on the modeling aspects. He tried to model the tropospheric chemistry and the climate change, and try to predict how the atmospheric ozone is changing with time and how the chemistry is changing, and what are the steps we need to take to improve the quality of the, or understand the processes which are happening in the atmosphere. Again, Space and Atmospheric Division has several laboratories, like we have Optical Aeronomy Laboratory, and it is used to measure day and nighttime air glow emissions at different wavelengths. And this laboratory or this instrument was developed completely in-house. So this this technique has different spectral resolution and can be used over a varying field of views. It is again, this instrument is working quite long, and it can be used for predicting different daytime processes or the nighttime processes which are happening using the air glow measurements. Then we have Space Weather Laboratory. This laboratory is equipped with the several instruments like air glow photometer, GPS, GNS, RS receiver for total electron concentration and measurement, and it has also Langmuir probes for electron density estimation. So they try to predict how the
plasma or the electron density in the means ionosphere is changing, and how it is influencing this ionosphere is important because it is used for communication purpose also. So it is try to predict the variation in the ionosphere and try to magnetosphere, ionosphere, and thermosphere systems. Then we have aerosol lidar laboratory. Lidar is basically light detection and ranging laser radar. So it is used to estimate the vertical profile of atmospheric aerosol. So they shoot a laser, shoot a laser in the atmosphere, and from the different depths, since the concentration of the atoms or the molecules in different parts is different, so scattering is different. So by measuring that, they can estimate the aerosol depth profile and vertical profile of atmospheric aerosol in these regions. And it is equipped with dual wavelength and dual polarizer, means that the lidar at PRL is equipped with these facilities. Also, it's established at other parts of the country. Then we have aerosol radiation measurement laboratory, which measures the columnar aerosol content, composition, and the size along the solar and the terrestrial radiations. So it is equipped with the instrument like multi-wavelength sun photometer, pyranometer, pyrogeometer, and periheliometer. Then we have a aerosol monitoring laboratory, which in the real time measure the optical, physical, and chemical properties of the atmospheric aerosols. So it has several instruments which are there. It has multi-wave ethylometer, single particle soot photometer, so it measures the soot also. Then we have multiple wavelength nephtalometer, aerosol size spectrometer, and aerosol chemical speciation monitors. Then we have a VOC, volatile organic carbon atmospheric laboratory, which measures the volatile organic carbon content present at the trace level in the atmosphere. This is the first laboratory to start within in India and performing observations continuously since 1998, and it has developed several instruments for VOC measurements. Then we have space other like a cloud and boundary layer measurement laboratory, which in the real time measures the atmospheric boundary layers, clouds, and the rain and used for the rain predictions. Then ABL is atmospheric boundary layer is very crucial for various fields, including meteorology, air quality modeling, wind energy, climatic related studies, pollutant dispersing modeling, and obviously the laboratory is equipped with the instruments which can perform such measurements like measurement of the atmospheric boundary layer, clouds, and the rain related sensors. So they have the lidars, ceilometer, automatic weather sensors are there, and dysdrometer is there, which can measure the raindrop size and the quantity also. This space sciences group is active, as I already told, is actively involved in several space missions like Aditya L1 and Disha, and also conducting balloon experiments continuously for measuring the atmospheric parameters on a routine basis. And the details can be obviously found on this particular website. You can go to the website and search for space and atmospheric division. These are the different instruments which are there, though. So they have all sky imager, so daytime and daytime air glow photometer, multi wavelength air glow photometers, photometer for mesospheric temperature measurements. Then they have digisonde, portable sounder, Fabry-Pérot interferometer, GPS and GNSS receivers, as I already told you. They have a high throughput imaging SL spectrographs. Then mesosphere, thermosphere, air glow photometer, multi-wavelength imaging spectrograph, which is using again the axial gratings. Then narrow band, narrow field view photometers they are having. Then near infrared imaging spectrographs, air glow infrared, which performs in infrared as infrared spectrometers. Then they have shortwave infrared imagers, which we call as SIRI also. Next, we move to another observatory, which is there in Udaipur. So we call it Udaipur Solar Observatory, and is a dedicated laboratory for solar observation in the country.
This is a very interesting observatory which is situated in the middle of a lake, Fateh Sagar Lake. And you can see this is as a telescope and some other back-end instruments which are there. It has e-callisto which are there. So these are the people, or these are the researchers which are associated with the SPAC laboratory. We have Professor Nandita Srivastava. Uh, in solar physics, since you know that the temperature is very high, we need modeling a lot. So people or the faculty members in this I'm sorry for this. This is you should be USO research. So the people in the USO observatory are involved in the theoretical measurements, modeling. So they are MHD modeling they are conducting, and also the continuous observation of the solar spectrum or the sun. So what type of processes or what type of features are developed on the sun, since sun is very dynamic, and obviously the existence of Earth depends on the sun. So whatever, if there are changes in the sun, it is going to affect the Earth atmosphere. We have so many satellites in the surrounding the Earth right now, and which are very important for the communication purpose and other purposes. So we should keep an eye on the sun, because any activity or any malicious activity from the sun side can affect the satellite network, and can affect the cosmic, since it can eject a solar energetic particle which can affect the performance of the satellite and the instrument on the Earth also. And also the health can affect the Earth atmosphere to some extent. So we have to keep a close eye on the solar atmosphere. So the people in this laboratory are involved in mainly modeling, are involved in theoretical modeling, simulations, as well as the observation. So Professor Nandita Srivastava is involved in space weather modeling, trying to study the coronal mass ejection and the filament eruptions in there, and conducting the MHD modeling of these processes on the solar surfaces. Then Professor Shibuke Matthew is there, who is involved in the instrumentation and observation stuff. He's working on solar polarimetry and the sunspots. Then again we have Ramitendra Nath Bhatnagar, who is involved in MHD simulations in the sun and the solar atmosphere. He's he's studying the coronal mass ejection also, and trying to study how the different coronal loops are formed. Then we have Dr. Bhuvan Joshi, who is trying to study the solar cycle, solar transients, and the solar eruptions on the sun. Then we have Brajesh Kumar, who is involved in solar oscillation, so trying to study the solar energetic transient, solar energetic particles, and solar active optics, which need to be developed. Then we have Dr. Rohan Lewis, who is trying to study the sunspot fine structure, photospheric and chromospheric coupling, eruptive phenomena, and the post-focus instrumentation. So he's involved in instrumentation aspects also, and also some of the modeling stuffs. Then we have Brajesh Gupta, who is working mainly in the modeling, and he's working on heating of the solar transition regions, corona, MHD waves, and small scale transients, and the solar spectroscopy, and trying to explain the features which are observed on the sun. So we have a US observatory which was established in 1975, and generally in the Udaipur, the sky conditions are favorable for solar observation. So the observatory is established in Udaipur, but importantly, it is situated in the middle of Lake Fateh Sagar. Why it is important to make the observatory in the middle of lake? Because during summer the heating is huge. What heating can do is it can change the density, and it can lead to the turbulence in the air mass. So if we are performing experiment during daytime, then that turbulence in the air mass can lead to erroneous results or the erroneous observation. So to minimize it, the observatory is situated in the middle of water, in the middle of the lake, so that such effects can be minimized due to the presence of water nearby. So its main objective is to study the dynamic phenomena occurring on the surface of sun. The lab is equipped with telescope used for solar and observations,
and it has like multi-application solar telescope, which we call MUST, and SPAR telescope, which are continuously keep an eye on the sun, and also supported by the backend instruments. So these are some of the observatory. Like it has the adaptive optics laboratory. In this laboratory, the calibration testing and of the optical components and the optical electronic components in the done in-house. We also developed instrument for like prototype instrument for optical astronomy. And this laboratory is obviously state-of-art laboratory and only one of its kind laboratory in country for research and activities which are related to the solar and high imaging resolution. Development of the instrument for high imaging resolution imaging. Now, it is equipped with the solar telescopes. It has laser interferometers and a compact spectrometer. Radon is random phase screen generator also is present in this laboratory, and is actively involved in the US observatory. As I have told, this observatory is actively involved in theoretical modeling, simulation, and observation to study the solar processes. These are some of the instruments which are available. It's like 50 centimeter aperture multi-application solar telescope MUST, and it is equipped with the backend instruments like imaging spectropolarimeter, filter graph, adaptive optics, and multi-slit spectropolarimeter. So we can do the polarization measurements and also in different wavelength bands, so that we can see the different means different bands, what type of activity is happening on the sun in different colors, and then also do the polarimeter related studies, polarization related studies, so that we can understand how the magnetic field is influencing these stuffs, how magnetic field is influencing the different processes, and how magnetic field is playing a role in different activities like coronal mass ejection or spicule formation, or different activities which are taking place on the surface of the sun. It is also a part of Global Oscillation Network Group, which we call GONG. So we have a GONG telescope also. And it's like another instrument like E-Callisto, Compound Astronomical Low Cost Frequency Instrument for spectroscopic and transportable observatories there, which is used for spectroscopic purpose. And obviously, as I told, we have laboratories related to the instrumentation and in-house mechanical workshop, which deals with the all the maintenance and the sound keeping of all the telescopes and the optical components. Next, moving on to the theoretical physics division. Obviously, theoretical division doesn't have the instruments and which can be used for the purpose, but it's the backbone of the PRL, because all the theoretical simulations, all the physics predictions, all the experimentalists seek their help for simulating different environments and understanding the physics behind different processes. So this group was, since this requirement is so much, this group initiated soon after the PRL is established. So this is the first group which was formed after the PRL is established, because we know the importance of theoretical modeling and theoretical physics to understand different processes. Then it started, the first group which was introduced was nucleophysics. So nucleophysics started when this group was established. Then it diversified itself and included the plasma physics. Now you know the IPR is there in Ahmedabad. So it was a part of this group initially, plasma physics group, which later on moved to as a separate institute. So PRL is basically mother institute of several such institutes. So it diversified into plasma physics, complex systems. They are doing theoretical high energy physics, particle physics analysis, neutrino and flavor physics. They are trying to study the astroparticle physics, cosmology, different type of interactions like strong interaction, weak interaction, complex systems. They are trying to understand the crystal formation, type of nature of the crystal, how the crystals are formed. They are trying to study the critical temperature for superconductivity, trying to understand the atomic physics. So many such studies are done in theoretical physics division, and they are continuously helping all the space missions also, and the different division, catering their help to different divisions of the PRL.
Now, in theoretical physics division, we have Dr. Parimita Datta. She joined few years back only, and working mainly on the condensed matter physics and trying to understand how the different crystals are formed and what are the properties of the crystals which are important, and like superconductivity and other properties of the crystal she's studying. Then we have Professor Subhavati Goswami, who is working on neutrino physics. Then we have Professor Partha Konar, who is a very dynamic fellow working on particle physics, phenomenology at Large Hadron Collider, trying to understand the Higgs boson, supersymmetry, dark matter, physics beyond the standard model, how it is working. He's also involved in deep learning and artificial AI ML. Also, he is involved quite often. Then we have Professor Namit Mahajan, who is working on the particle physics, beta physics, beta decay processes, CP violation, effective field theories, and other processes related to it. Then we have Dr. Ketan Patel, who is working on physics beyond the standard model and trying to understand the different particles which cannot be explained by the standard model in physics. Then we have Dr. Satyajit Seth, who is working on quantum cryptodynamics and quantum chromodynamics, and the precision calculation. We have Professor Navinder Singh, who is working on theoretical condensed matter physics and trying to understand the superconductivity and the metal problems, strange metal problems. He's working on application of non-equilibrium statistical mechanics to strongly correlated systems. And these are some of the areas of research, like theoretical phenomenological aspect of elementary particle physics, collider physics, neutrino physics, flavor physics, precision physics, CP violation, physics beyond standard model, they are involved. Then quark gluon plasma, quantum chromodynamics, they are involved, phase transition. Then they are trying to study the gravitation, cosmology, astroparticle physics, how the inflation, dark matter is evolving, early universe has evolved in the past. Then they are trying to understand the cosmic microwave background radiation, gravitational waves also. Trying to understand at the atomic physics, they are trying to understand the Bose-Einstein condensation theoretically, and what are the different type of degenerate quantum gases which are developed. Then in the condensed matter physics, we are working on unconventional superconductivity topology in condensed matter systems, and also working on artificial intelligence, deep machine learning in fundamental ways, trying to incorporate these into the fundamental research. I think this is all related to the theoretical divisions. Now I would like to come to the opportunities which are available for the different MSc students or the research fellows which are working in different laboratories across India or in your universities, and how they can make use of the PRL. So all of you know, I have shown you the capabilities of different divisions. So wherever you feel like, okay, this person can be, or this type of work is relevant to me, then you can straight away approach those persons. And in PRL, we also recruit the JRFs after MSc. So how this recruitment is done? So we select PRL in PRL, we select junior research fellows. So first criteria for them is they in BSc and MSc, they should have first division, like more than 60% or equivalent grades in any time. Then like they should have applied for or cleared the exams like CSIR, UGC NET, JRF, or GATE, JEST, UGC NET, JRF, or some assistant professorship. So what we do, we shortlist based on their AIR ranks, and then the candidates are called in PRL and they were interviewed by a committee, by different committees for which he has for which division he has applied. So different committees are there for different division, and each committee interviews the persons, and whichever they find satisfactory, they are recruited. So people can choose different branches of physics, chemistry, engineer, people from different branches of physics, chemistry, engineering, physics, photonics, space sciences, atmospheric sciences, environmental sciences, oceanography, meteorology, geology, geophysics, earth sciences, remote sensing, etc. can apply in the PRL. So these are the different branches of sciences which are there and which can be used for, which can apply in the PRL.
And in fact, the candidates sometimes like PRL have their external fellowships like DST Gate Fellowship or the GRF Fellowship or the Gate Fellowships. They can be applying in the PRL, and they are encouraged to apply. Uh, so, and also PhD students are also recruited under external funded project from time to time. There is also PDF fellowship program in the PRL. In this, is there any question, or I am hearing some? Okay, so there is also postdoctoral fellowship program at the PRL. In this, what is done is like the people who have done PhD or just submitted their thesis, they can apply for postdoctoral fellowship. Again, here also the criteria is they should be first division at MSc and BSc level, and their age should not exceed 35 years. So what they have to do, they have to approach a PRL faculty, draft a proposal, and then submit it to the chairman of the PDF committee. So the proposal drafted in consultation with the PRL faculties will be considered, and they will be called for the interview. And then if they, after their like satisfactory performance, they are recruited in PRL, and they are offered a postdoctoral fellowship for 2 years. Important thing is, like in some cases there is a special fellowship program which we call PRL's Vikram Sarabhai postdoctoral fellowship or Vishwas. In this, candidate can get as high as 1 lakh per month scholarship. So it's a very prestigious fellowship. I think if somebody is there, they should try for this fellowship in PRL. Now, there are also training programs like internship programs in the PRL. We are like doing for engineering and the master's candidates, we are doing the training program like PE, ME, and MTech students are given opportunities to apply for a duration for 4-month training or the 4 to 6 months training. Also, there is a facility for 6 to 12-month training for if they want to do their dissertation or report in PRL. So they have to approach the suitable person who have listed their projects, and the project student is interested in. After discussion, they can frame a project timeline, and then they can carry out this work in PRL. Then we have also a summer internship program in which the students, specifically the master students from different universities, are called in PRL and given opportunity to work in PRL for a duration of 2 months. And like they can be in undergraduate or postgraduate level. But there's again the criteria is they should have secured more than 60%. And candidates from optics, laser physics, space physics, geology, geophysics, atmospheric sciences, environmental sciences, meteorology, chemistry, ocean sciences, and related subjects can apply for summer internship program. So I think this is all from my side. So this is a website of the PRL. Whatever details I am given, they are available in this website. So like opportunities, you can see there are faculty openings also. If somebody is interested in faculty to apply for faculty position, they can go through this link and they can see what are the conditions for this. Then there are different awards, job vacancies, and externally funded fellows. So all these can be founded in this under this tab. Then under the research tab, you will see different divisions which are listed. So like whatever divisions I have discussed, they are listed, and and if you are interested in a particular division, you can just browse through that division and see what areas you are interested in, and then you can approach accordingly. Or if you want to conduct some experiment for your research, or you are like want to do some training, or if you want to apply for JRF fellowship, you can go through these links and then make up your mind in the future. So finally, I should thank you and for giving me this opportunity, and I will be happy to answer the questions if they are. Hello, sir. Hello, yes. Gaurav sir is busy in some other work, sir. Right. So on behalf of the research and the development department, I would like to thank you, sir. Yeah, you're welcome.
And if anybody have any question, then freely ask to the sir. I think, sir, nobody have any question. Yeah. So, with your permission, can we end the session, sir? Yeah, sure. Why not? Yes. I hope I could show whatever is like the requirement of the lecture actually. So I tried my best to present what are the facilities present in the PRL, and it can be useful for some of the students which are present there. Yeah, sure, sir. Yes, yes. Thank you so much, sir. You're welcome. So I can log out now? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So our next speaker is Dr. Haresh Ram, sir. So Dr. Haresh Ram, sir, is assistant professor in the Department of Chemistry, Tolani Commerce and Art Science College, Adipur. So, sir, welcome you, sir, and thank you for our accepting for invitation, sir. Can you hear me, sir? Thank you. Thank you. Okay, sir. Sir, I request you to please share your screen. Yes, yes. दिख रहा है सबको? No, sir. White screen is visible, sir. Okay. Then Yes, sir. दिख रहा है? It is visible, sir. Okay. Can you change the slide, sir? Okay. Yes, sir. It is visible. Yeah. Thank you, Chirag. चलो. My name is Dr. Haresh Ram. वैसे तो आप सब लोग जानते ही है, ज्यादातर जो स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री वाले वो सब तो जानते ही है मुझे. इसमें केमिस्ट्री वाले आई थिंक मैं समझ रहा हूँ 6-7 स्टूडेंट केमिस्ट्री वाले हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के हैं. जो आज जो मेरा टॉपिक जो है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि भाई ये पेपर राइटिंग प्रोसेस क्या है. कोई भी पीएचडी होता है, कोई भी रिसर्च होता है, तभी इसका पेपर राइटिंग करते हैं. सबको सुनाई दे रहा है ना? हेलो. Yes, Yes, sir. sir. It is audible, sir. ओके ओके ओके, वेलकम. नहीं सुनाई देता है तो बोलना हो बीच में, मुझे पता नहीं चलेगा. तो आपको कैसे पेपर है वो राइट करना है. जैसे हम जानते हैं कि भाई पीएचडी करते हैं हम, अभी आप लोग पीएचडी में आए तो आप सबको पता है कि पीएचडी का क्या वैल्यू है. लेकिन मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि मैंने पीएचडी 2011 में खत्म किया है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में. हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पीएचडी किया है. मेरा मेन जो टॉपिक था वो पिरिमिडिन का था. तभी जब आपके तरफ में था मेरा भी कोर्स वर्क था, लेकिन ऑफलाइन था. आपका ऑनलाइन है. और कोर्स वर्क जो हम लोग समझते हैं ना कि भाई कोर्स वर्क एक वन टाइप ऑफ हम समझते हैं कि भाई जो ऑनलाइन लेक्चर चालू होता है तो भरना पड़ता है. मतलब हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो सर वो बोलेंगे ये बोलेंगे, वही दिमाग में रहता है. लेकिन थोड़ी देर
आज तक आपने जो भी किया है, लेकिन आज थोड़ी देर निकाल देना दिमाग से, तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक जो है वो आपको लाइफ टाइम जरूरी होगा, लाइफ टाइम जरूरी। केमिस्ट्री कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम केमिस्ट्री है या तो कोई फिजिक्स है या तो मैथ्स है, लेकिन उसमें आपने जो पेपर जो है, पेपर पब्लिकेशन जो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तभी क्या होगा पता, कि तभी स्ट्रॉन्ग पेपर नहीं है आपके पास, तो आपने पीएचडी किया, आप कहीं पे भी जाओगे, कोई इंडस्ट्री में जाओगे या तो कोई भी फील्ड में जाओगे, जैसे सर अभी बोल रहे थे, मैंने थोड़ा लेक्चर सुना कि भाई पोस्ट पीएचडी के लिए, तो पोस्ट पीएचडी के लिए जाते हैं हम, जब भी उसमें एप्लीकेशन करते हैं तो वो मेरी थीसिस में हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, वो सभी चीज किस पर डिपेंड रहती है कि हमारा पेपर पब्लिकेशन कितना, कौन सी जर्नल में है, हमने पेपर लास्ट में जो भी पेपर पब्लिकेशन किए है वो कौन सी जर्नल में है, वो जर्नल की वैल्यू क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, उसके साइटेशन क्या है। आपका नाम जब भी वो गूगल में सर्च करेगा कि भाई आपका नाम है भावेश झाला, राइट, या तो आपका नाम है कोई भी, आप ABCD वो सर्च करेगा, उसके बाद गूगल साइटेशन डालेगा, तभी आपके जो पेपर है वो खुलेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो एक पेपर था, राइट, अभी आपने 2024 में किया, अभी कोई 2030 में देख रहा है उसको कि भाई पेपर राइटिंग में, मतलब भावेश चाला का पेपर 2024-2025 में था, तो भावेश चाला का साइटिंग 2030 में वो देख रहा है, तभी वो पेपर के साइटेशन कितने हैं, साइटेशन का मतलब क्या है, वो सभी चीज आपको मैं बताऊंगा। जैसे हम एक सिंपल से मैं बोलूंगे तो साइटेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने वर्क किया है वो कितने सारे लोग वर्क यूज करते हैं, मतलब कि आपने जो बना के पेपर दिया है वो पेपर को यूज, मतलब साइट करते हैं, उसको सिर्फ देखते नहीं है, व्यू करना नहीं है, जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं कि हमारा वीडियो व्यू करेंगे, उसके बाद जितनी बार व्यू होगा उसके बाद हमें वो पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, वो व्यू करना नहीं है, व्यू करने के बाद वो यूज करना है, कि उसका भी पेपर बनाएगा, उसमें आपका एक एज ए रेफरेंस वो यूज करेगा, राइट, तभी वो पेपर की वैल्यू आपको समझ में आएगी, और जितनी बार साइटेड होता है इतना नाम आपका अप जाता है। जैसे सर ने बोला था कि पोस्ट पीएचडी के लिए इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे होता है, आप आउट ऑफ कंट्री पे आपको कोई रिज्यूम डालना है तो वो सभी जगह पे एक ही चीज है खास, क्या पता, कि भाई उसमें उसका पेपर पब्लिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आज मैं आपको वही चीज कि भाई पेपर राइट कैसे करते हैं, वैसे तो ये कॉमन है, यूट्यूब में आप जाओगे तो भी ये मैं जो आपको बनाया है पीपीटी वगैरह मिल जाएगा, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस आपके पीएचडी के पार्ट में क्या है। पहले तो आपको पीएचडी में आपने ज्वाइन किया वो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम इसका पर्पज क्या है, कि भाई हमने क्यों ज्वाइन किया, ये पीएचडी करना क्यों चाहते, तो उसके पर्पज अलग अलग रहते हैं। कोई एक बंदा बताएगा मुझे कि भाई आप, मैंने जो पीएचडी सर ज्वाइन किया उसका पर्पज मेरा ये है, इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आप आराम से बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, गुजराती में बोल सकते हो, हाँ, कोई बताएगा कि पीएचडी यहाँ पे आज मैंने ज्वाइन किया, अभी वैसे मैं समझता हूँ तो आपका 6 महीना खत्म होने वाला है, बराबर, तो कोई बताएगा कि भाई इस जो मैंने ज्वाइन किया है वो इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं डिग्री, किस वजह से मैं ये डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपके दिमाग में क्या क्या होगा। वैसे तो मेरे भी स्टूडेंट इसमें है, एक आध दो स्टूडेंट, वैसे उसको मैंने सुनाया हुआ है, आज वापस सुना रहा हूँ कि भाई हमने पीएचडी, एक तो कि भाई हमने मास्टर डिग्री की है, हमने जीसेट पास की, हमने नेट पास की और हमने पेट पास की, ये 3-4 चीजें हमने किया है, इसलिए हमने पीएचडी में मिला, इसलिए हम पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा का आगे ऑप्शन ये है कि भाई हम पीएचडी इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें डॉक्टर की डिग्री मिले, उसके बाद हमें प्रोफेसर बन सके, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, उसके बाद आगे बढ़ सके उसमें कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो सभी चीज के लिए। बहुत सारे का पर्पज ये होता है कि आप के पास डॉक्टर की डिग्री के बाद आप इंडस्ट्री में जाते हो कहीं पे भी, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और बहुत सारे का पर्पज जो है, वो मैं जो बोल रहा हूँ उसका पर्पज ये होना चाहिए कि भाई अभी जो आप कुछ भी संशोधन यहाँ पे रिसर्च जो आप कर रहे हो, वो आपके फ्यूचर, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको यूज होता है, वो आपका रिसर्च सही में मायने में रखता है। और पीएचडी वैसे ही होता है, मैं समझ रहा हूँ। सिर्फ हम, मेरे दिमाग में वही चल के हम रखेंगे कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना जरूरी है, 3 साल में फटाफट खत्म करके जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भले ही ऐसा हो हम 3 साल में खत्म करेंगे, वो गवर्नमेंट की एक लिमिट है, 3 साल में खत्म करते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा भी समय मिलेगा पीएचडी में। पीएचडी में कोई समय नहीं रहता है, 5 साल हो गए तो उसके बाद एक्सटेंशन और भी मांग सकते हो, वो सभी चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज आपके आई थिंक रजिस्ट्रेशन डेट से 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे, क्योंकि आपका कोर्स वर्क आई थिंक खत्म होने वाला है, राइट। तो आपको आज से आपका दिमाग में डालना है कि रिसर्च पेपर हमें राइट करना है। तो रिसर्च पेपर ऐसे तो राइट नहीं कर सकते, पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। तो वो रिसर्च पेपर राइट करते हैं तभी काम कैसे कैसे करेंगे हम, वो सब भी चीज आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। अभी पहले हम क्या काम करेंगे। तो मेरा नाम आप जानते हो, डॉक्टर हरेश राम, असिस्टेंट प्रोफेसर टोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, राइट। आज का जो टॉपिक है वो पेपर राइटिंग प्रोसेस। तो उसमें अलग अलग पॉइंट है, देखो सबको दिख रहा है ना, जो मेरा स्क्रीन है दिख रही है ना सबको, यस सर। अच्छी तरह पढ़ सकते हो ना आप? देखो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट ये है कि भाई पेपर राइटिंग करना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये हमें सब समझ में आता है, सब बहुत इजी है, कुछ ये मुश्किल नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज हम रिपीट करते हैं। जिसको समझ में आता है पेपर राइटिंग उसको आज रिपीट करना है, जिसको नहीं समझ में आता है वो थोड़ा देख लेना, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, कि जो हम पेपर जो भी है बना रहे हैं, जो हमारा वर्क है, हम जो वर्क डिसाइड किया है उसका पर्पस क्या है। जैसे कि आज अपने बहुत सारे लोगों ने, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज डिसाइड की होगी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है हमें, राइट। तो हमें वो पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है। फिजिक्स है तो उसके लिए अलग अलग स्पेस वाला जो है, तो उसका टॉपिक पसंद करते हैं तो उसका पर्पस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है तो उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस आप सिंपल से बता सकते हैं कि भाई उसका पर्पस है ऐसी ड्रग्स हमें मिले कि भाई मेरा जो आज हम बना रहे हैं वो कंपाउंड आगे जाके वो उसकी एक्टिविटी, वो बहुत सारी चीजें हम लेना है, बराबर। उसके बाद उसको दूसरे हमारे सर के जो दूसरे स्टूडेंट आते हैं उसको आगे देना है। उसके बाद हमारा इसमें अच्छा सा पेपर आए, किसी वजह से उसमें प्रोजेक्ट मिले, वो बहुत सारी चीज आती है, बराबर। तो उसमें पर्पस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। वो पर्पस के हिसाब से आपको, मतलब पर्पस क्या है वो समझना है। उसके बाद टॉपिक देखो, सेकंड है चूजिंग ए टॉपिक, कि भाई हम टॉपिक क्या है। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई टॉपिक बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री है तो आपको जितने चाहो इतने टॉपिक मिल सकते हैं। फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक मिल सकते हैं, मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक मिल सकते हैं। मैथ्स में हम पीएचडी करें तो अभी तो मैंने देखा है कि भाई मैथ्स और केमिस्ट्री का मिक्स जो वाला है वैसा भी सारे टॉपिक इसमें आएंगे। थर्ड है कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू, जो चीज आपने करी अब तक हो गई होगी आपकी, कि भाई लिटरेचर रिव्यू, जो भी आपने टॉपिक दिया है आपको आपके गाइड ने, उसमें आपने अभी तक जो भी है वो किया है, क्या चीज की है, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू है क्या। तो भाई लिटरेचर रिव्यू मतलब जो भी हमने टॉपिक लिया, भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बराबर। ऐसा कुछ भी है नहीं कि अनलीगल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लिटरेचर रिव्यू वो आपका आपका जो टॉपिक है उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो मिनिमम आपका लिटरेचर रिव्यू कितना होना चाहिए, मैं समझता हूँ तब तक आपके पास आपके जो पेपर है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमने पेपर तो डाउनलोड कर लिया, उसके पीडीएफ है, ये कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं हुआ। कितने लोग जानते हैं अच्छी तरह के लिटरेचर रिव्यू क्या है। तो भाई लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली और पीडीएफ पढ़ लिया, वो कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप 50 पेपर डाउनलोड किया, उसका पीडीएफ निकाला, उसका पेज निकालो, या तो ऐसे ही पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसको रिव्यू करो, मतलब जो भी लिटरेचर आपके सामने निकला उसका रिव्यू करो कि इसमें से जो भी हमें बनाना है, कोई भी चीज, मानो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें कोई भी कंपाउंड आपको बनाना है अलग अलग, तो वो कंपाउंड बनाने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए और कैसे चाहिए, उसका टेम्परेचर, ये सब चीज तभी आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें तो पेपर में तो अलग अलग चीज और अलग अलग मेथड मिलेगी है। उसके बाद देखो फोर्थ है,
फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद है डेवलपिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है क्या, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। हाइपोथेसिस मतलब कोई भी चीज आपने बनाई है। जैसे कितने लोगों ने नाम सुना है मॉलिक्यूल डॉकिंग का? मॉलिक्यूल डॉकिंग ऐसा नाम सुना है केमिस्ट्री वाले? कैन यू हियर मी? Yes, sir. मॉलिक्यूल डॉकिंग ऐसा नाम सुना है? ऐसे कितने लोग हैं? ये कर दो है ऐसा। ये मॉलिक्यूल डॉकिंग जो चीज है वो क्या है, तो कि भाई वो एक हाइपोथेसिस, जैसे कि भाई हमें जो भी कंपाउंड है उसके बारे में लिटरेचर किया कि भाई वो जो, मानो एक कोई कंपाउंड ले लो कि चलो टायजोलो केमिस्ट्री ले लेते हैं, बराबर, टायजोलो पिरिमिडिन। टायजोलो पिरिमिडिन लिया तो वो किस में यूज होता है, वो ड्रग्स क्या है, उसकी कितनी सारी ड्रग्स है, वो सब देखना है। उसके बाद क्या करना है कि भाई ये ड्रग्स में यूज होता है, राइट, ये हमें पता चला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये है कि भाई उसके बाद हमें देखना है कि भाई आपका जो लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से उसका मॉलिक्यूल डॉकिंग करोगे, उसको प्रोटीन जो भी है अलग अलग उसके जो पेपर मिलेंगे उसमें से आप उसके साथ बाइंड करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी एक्टिविटी इसके आसपास आ सकती है। और आप अभी क्या देखो, अभी का जो रिसर्च है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल डॉकिंग पे चल रहा है, सबसे ज्यादा। उस तो मॉलिक्यूल डॉकिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप कंपाउंड बना लो। एक बार खास मेरी बात सुना, मॉलिक्यूल डॉकिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि आपने कंपाउंड बना लिया और उसको पब्लिश किया, ऐसा नहीं होता है। आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसमें मॉलिक्यूल डॉकिंग करो, उसमें आप प्रोटीन बाइंड करके देखो कि उसमें है कि ये जो है प्रोटीन है वो ये कंपाउंड के साथ बाइंड हो रहा है और इसकी एक्टिविटी ये दिखा रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड हम बनाएंगे तो इसमें ये एक्टिविटी आ सकती है। ये क्या है, वो एक हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है, वो भी एक आपके पेपर का ही पार्ट है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक ऐसी चीज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर राइटिंग है, इसमें आपको ये भी चीज है कि भाई इसमें आपको डेवलपिंग ये हाइपोथेसिस वो सभी चीज है क्या कि भाई वो आपको थीसिस पूरी, मतलब पूरा आपका वर्क जो पीएचडी का है वो सभी चीज आती है। क्योंकि पेपर कब बनता है, आपका वर्क बनने के बाद ही बनता है। पेपर ऐसे तो कोई बना नहीं सकता है, तभी पहले आपको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक वाले है तो एनालिटिकल वाले है जो, तो उसको पूरी मेथड सेट करनी पड़ेगी, वो सभी चीजें, राइट। उसके बाद देखो तो डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपने अभी एक कंपाउंड बना लिया, उसका हाइपोथेसिस कर लिया, उसके बाद वो कंपाउंड जो है उसको आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड डिजाइन करना है। वो किससे कर सकते हैं, तो कि भाई लिटरेचर रिव्यू से हम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, तो कि भाई लिटरेचर रिव्यू किया है उससे हिसाब से अलग 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 मेथड बहुत सारी लिखेंगे, उसमें से हम एक मेथड है वो डिजाइन करेंगे, भाई एक ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें करना है। उसके बाद देखो कलेक्टिंग द एनालिसिस डेटा, कोई भी कंपाउंड अभी बन गया, आपको एक्सपेरिमेंटल कर लिया, उसके बाद उसका कलेक्टिंग क्या करना है, तो एनएमआर करना है, आईआर करना है, मास करना है, बहुत सारी चीज आती है। आप जितना चाहो इसमें डेटा एनालिटिकल डाटा कर सकते हो, एक्सआरडी वगैरह कर सकते हो, बराबर। लेकिन मेन जो डेटा है, मानो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बनाया है तो उसको प्रूफ करना कि ये कंपाउंड है वही बना हुआ है, तो उसके लिए आपको एनएमआर करना पड़ेगा, आईआर करना पड़ेगा, मास करना पड़ेगा, C13 मतलब एनएमआर में C13 1H एनएमआर वो सब करना पड़ेगा। तो वो एक एनालिटिकल डाटा है, कलेक्ट करना है। उसके बाद इंटरप्रेट रिजल्ट, ये एनालिटिकल डाटा आएगा। उसके बाद मानो कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये आपका एनालिटिकल डाटा तो मिल गया आपको, उसके बाद जब आपको एनालिटिकल डाटा 1H एनएमआर आया तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 1H एनएमआर आपका जो है आपका कंपाउंड बनाया है उसका है कि नहीं है। इसीलिए वैसे मैं बार बार बहुत सारे मेरे टीवाई के स्टूडेंट को भी समझाता हूँ कि भाई आप जो भी चीज कर रहे हो वो इसलिए कि भाई आपने किया है, अभी 1H एनएमआर सीख रहे हो, मास्टर डिग्री में भी आपने सीखा होगा, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है वो खास जरूरी है, वो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। ये जो आप अच्छी तरह नहीं जानते हो तो आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। तो इंटरप्रिटेट करो रिजल्ट। उसके बाद राइटिंग द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी राइट करना है। तो इंट्रोडक्शन आपका जो कंपाउंड बनाया सभी डेटा आपके पास आता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन राइट करने के लिए हम जाएंगे। तो भाई इंट्रोडक्शन राइट कैसे करेंगे, जो भी हमें कंपाउंड मिला उसके बारे में बहुत सारे लिटरेचर भी किया है, उसके हिसाब से हमें इंट्रोडक्शन राइट करना है। इसके बाद आता है प्रेजेंटिंग द मेथड ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट, मतलब जो भी हमने अभी एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल डाटा हाइपोथेसिस रिसर्च जो है वो सभी का जो रिजल्ट मेथड का जो रिजल्ट है वो रिपोर्ट करना है लास्ट में। वो बहुत कम
लाइन में रहता है आपके जो पेपर में, मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा, राइट। डिस्कसिंग द फाइंडिंग एंड राइटिंग द कंक्लूजन। तो डिस्कस करना है, जो भी हमने फाइंड किया है, आगे जो हमने पॉइंट किया है वो सभी चीज फाइंड किया, उसका डिस्कस करना है। उसके बाद उसका लास्ट में 8-10 लाइन में आपको कंक्लूजन लिखना है। वो आपके पेपर में जो है, सभी पेपर में आप जानते हो कि कंक्लूजन बेस्ड है, कोई भी थीसिस है उसमें भी कंक्लूजन बेस्ड है, और कोई भी पेपर में आप करते हो तभी उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है वो पार्ट क्या है। तो कि भाई एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद साइटिंग द रेफरेंस, मतलब बहुत सारे जो रेफरेंस है, रेफरेंस भी अभी जो आप पेपर में लिखते हो ऐसे रेफरेंस होने चाहिए कि वो रेफरेंस आपके सामने आपको मिलने चाहिए। बहुत सारी जगह पे आप पेपर पुराने डालोगे तो उसके जो अंदर रेफरेंस होंगे वो रेफरेंस कहीं पे आपको ऑनलाइन मिलेंगे नहीं। लेकिन अभी ऐसा, हेलो, कभी रेफरेंस ऐसा होता ही नहीं है कि भाई आपका ऑनलाइन है नहीं है। अभी आपको क्रॉस रेफरेंस करते हैं, कोई भी जर्नल है वो क्रॉस रेफरेंस करती है। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार इसलिए। right? तो फर्स्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग दिस पर्पस। तो उसमें कोई भी पर्पस समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप अपने थीसिस जो है, अपना अपना जो टॉपिक है उसमें ये सब क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, बराबर। तो क्वेश्चन करना है कि भाई इसमें वो खुद को ही करना है, क्योंकि पर्पस जो टॉपिक लेके जा रहे हैं उसका पर्पस समझना है तो खुद को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, तो व्हाट इज द सिमिलर टू द डिफरेंट फ्रॉम, व्हाट आर द कॉज एंड दे आर द consistently, what is the essential function, that what the definition and what is the history। मतलब आपके जो भी रिसर्च का पॉइंट लिया है उसकी हिस्ट्री क्या है। मानो कि बहुत सारे इसमें केमिस्ट्री वाले है जो उसने लिया होगा कि भाई हिट्रोसाइक्लिक लेना है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। फिजिक्स में लिया है कि भाई स्पेस इन्वायरमेंट का जो स्पेस के लिए किया है, तो उसके स्पेस में उसके बहुत सारे पेपर डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि जो मेरा जो टॉपिक है उसकी हिस्ट्री क्या है, आगे ऐसा कहीं किसी ने किया हुआ है कि नहीं किया है, बराबर। अभी आपने जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं उसने टॉपिक चूज तो कर लिए है, राइट। लेकिन कितने सारे ऐसे बंदे हैं, मुझे खास बताना है इसमें, कितने ऐसे सारे बंदे हैं कि इसमें साइफाइंडर रिएक्सिस ऐसे जो है सॉफ्टवेयर वो सब यूज किए हैं। ऐसे कितने लोग हैं? अभिषेक, कितने लोग हैं ऐसे? बोल सकते हो आराम से आप। साइफाइंडर रिएक्सिस ऐसा कुछ यूज किया है आप लोगों ने? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जाला, चिराग, हेलो, Yes, sir. आवाज Yes, sir. आवाज सुनाई दे रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कभी किसी ने साई फाइंडर यूज नहीं किया है। कोई भी रिसर्च साइंस में करने के लिए साई फाइंडर रिएक्सिस ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी आपने जो टॉपिक लिया है, राइट, अभी टॉपिक लिया और आपने काम भी कर दिया उसमें, बराबर। आप 1 साल के बाद काम कर लिया, 2-3 सीरीज बना ली ऑर्गेनिक में, या तो आपने कोई मेथड सेट कर ली एनालिटिकल में, राइट। बहुत सारी चीज आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये काम तो हो गया कहीं और। तो बाद में क्या करोगे आप? आपका गाइड ये काम चलाएगा नहीं, वो बोलेगा ये काम चलेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए नहीं चलेगा कि उसके पेपर आपको मिल जाएंगे, समझ गए? उसका पेपर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद वो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो पेपर पब्लिकेशन हुआ है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसने कहीं ना काम कर लिया है और उसने पेपर पब्लिश कर दिया। तो उसके लिए भी ये सब चीज जरूरी है कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ तब तक जो बहुत सारे गाइड है वो भी इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी को भी ऐसा इंटरेस्ट हो कि सर मैंने जो टॉपिक लिया है और मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ मुझे जानना है, तो आप मेरा जो नंबर है वैसे गौरव सर के पास है, आप ले सकते हो और आराम से आप मुझे फोन कर सकते हो। और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे कर सकते हैं ये फाइंडर रिएक्सिस, वो सभी चीज कर सकते हैं इसमें।
तभी आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक है वो क्या है, राइट। सही में आप जो कर रहे हो पीएचडी का काम बराबर है कि नहीं है, बराबर। देखो तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज। उसके बाद पर्पज में आपको नीचे हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, कि आपका जो अभी जो आपने टॉपिक लिया वो कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है ना घिसा पिटा हुआ टॉपिक तो नहीं है, अभी करंट उसका कुछ यूज हो रहा है, उसकी हिसाब से कोई भी चीज आप जो बनाओगे उसके बाद वो चीज वो अभी जो आपकी करंट जो रिसर्च है उसमें हो रही है कि नहीं वो देखना है, बराबर। व्हाट कैन एन बी मेड फॉर द और अगेंस्ट इट, मतलब आप आगे भी बना हुआ है आगे भी बनाएंगे। हाउ डिड यू हैपन, व्हाट डिड यू हैपन एंड व्हाट इज आवर पर्सनल रिएक्शन टू इट। वो खुद को रिएक्ट करना है, खुद को देखना है, ऐसा नहीं कि सबको पूछना है कि ये करेंगे ये है कि नहीं है, भाई ये देखो तो मेरा टॉपिक बराबर है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो आपको बहुत बार ऐसे भी सर भी टॉपिक देते हैं और आप खुद को भी करना पड़ता है, बराबर। डिफाइन द पर्पज ऑफ योर केमिस्ट्री रिसर्च पेपर, ये खास केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री रिसर्च पेपर के लिए। आइडेंटिफाई द टारगेट वेदर फॉलोइंग द रिसर्च स्टूडेंट और प्रोफेशनल। ये बहुत सारा रिसर्च स्टूडेंट जो है उससे भी आप जान सकते हो और प्रोफेशनल कोई मतलब प्रोफेसर जो है उसको भी पूछ सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा टॉपिक है वो हम किसी और को ना बताए क्योंकि कोई चुरा लेगा, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि रिसर्च पेपर बनाना वो कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, राइट। उसके बाद है चूजिंग द टॉपिक, सिलेक्ट द केमिस्ट्री टॉपिक दैट इंटरेस्टेड यू इन एलिगेंस विथ योर एक्सपर्टाइज। Ensure the topic of research well and relevant of the current trends। current trends मतलब अभी जो रिसर्च हो रहा है उसके ट्रेंड्स के हिसाब से मेरा टॉपिक होना चाहिए। और जो केमिस्ट्री अंदर है वो चैलेंजिंग इन द केमिस्ट्री, मतलब चैलेंजिंग केमिस्ट्री होनी चाहिए, ऐसे किसी पिटी हुई नहीं चाहिए। Conduct the preliminary research in scale of the availability of research and data on this chosen topic। ये सभी चीज करने के बाद आपको जो रिसर्च टॉपिक मिलता है वो चूज करना चाहिए, राइट। उसके बाद थर्ड आता है कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए। सर्विस एग्जिस्टिंग द लिटरेचर रिव्यू इन द केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेटस ऑफ द नॉलेज। आप जानते हो कि रिसर्च जो रिव्यू है वो कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अभी तो बहुत इजी है ये सभी जो मैंने लिखा है, इससे भी आपका अभी इजी है कि भाई नेट जो आपके पास है तो आपको कोई एक पेपर में दे दूं कि भाई ये पेपर निकालना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे 2021 का पेपर जो है मेरे पास उसका DOI नंबर है, पेपर निकालना है, तो आप ये पेपर कैसे निकालोगे, कौन बताएगा। कोई ऐसा बता सकता है कि भाई आज मैं आपको बोलूं कोई एक टॉपिक दे दूं तो या तो मेरा ही खुद का ही पेपर दे दो, चलो 2021 का, बराबर। ऑनलाइन नहीं है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पैसा देके पेपर बनाते हैं, राइट, ऐसा पेपर है तो वो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो रिसर्च सही होता है वो पैसा देके बनाने वाले पेपर नहीं होते हैं, राइट। तो वो पेपर आपको निकालना है तो आप कैसे और कहाँ से निकालोगे। હેલો સર, हाँ बोलिए बोलिए। એનમાં જે उर्मी, DOI જે नंबर હોય हाँ એને DOI नंबर तो आपको सभी पेपर के मिल जाएंगे। હા તો એને કોપી પેસ્ટ કરીને સાઈ હબમાં પેસ્ટ કરીને એને ઓપન કરી શકાય। हाँ ये भी ये सबसे हम लोगों के लिए फैसिलिटी जिसके पास नहीं है, वैसे हम सब लोग ऐसे ही है। आप PhD कर रहे हो, आपके पास कोई साई फाइंडर का पासवर्ड वगैरह है नहीं, बराबर, एक्सेस वगैरह का, तो आपको यही करना पड़ेगा। साई हब जिसको पता नहीं है वो थोड़ा लिख लेना, साई हब ऐसा करके डालोगे, चाइनीज एक हैकर वेबसाइट है, राइट, उसमें आप DOI नंबर डालोगे तो मैं समझता हूँ तब 2021-22 तक के सभी पेपर वहां पे आपको मिल जाएंगे। कभी कभी नहीं मिलते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मिल जाएंगे। हाँ लेकिन करंट जो पेपर है वो नहीं मिलेंगे आपको, जो करंट पेपर है वो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते हैं पेपर, उसके लिए भी ऑप्शन रहता है कि वो आप जो ऑथर है उसको मेल करो, बराबर, वो भी आपको देंगे पेपर, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे इन लीगल और लीगल भी है जो इंडस्ट्री में रहती है, यहाँ पे उसके लिए पासवर्ड जो आपको लेना है, उसका ID वो सब कुछ लेना, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, वो इतने पैसे हम यूज ये नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है शाई हब, राइट। तो इसमें लिखा है कि भाई लिटरेचर रिव्यू, तो
आपको कभी कभी सर ऐसा भी बोल देते कि भाई करंट पेपर मुझे निकाल के दे दो, तो ये ऐसा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आप कर सकते हो, ऐसा आपको पता होना जरूरी है। फॉर्मेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, खास मैं एक आपको यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि भाई आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि अभी आपने किसी के भी साथ पेपर किया हुआ है, किसी के भी साथ आप पेपर में नाम है और उसमें पेपर में आपने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, ऐसे ऐसे कोई लोग हैं? किसी आपके जो सीनियर है, आपका जो कोई सीनियर है कि भाई पीएचडी में सीनियर में काम करा है, उसके साथ आपने पेपर बनाया है, रिसर्च पेपर, उसमें आपका नाम अंदर है, ऐसा कोई भी बंदा है? यस सर। हाँ, आपने कौन से आप किसके साथ आपका नाम है पेपर में? सर मैं जूलॉजी पे पीएचडी कर रहा हूँ और मेरे डिसर्टेशन वर्क में से मेरे 2 पब्लिकेशंस हैं। वाह, बेस्ट। मतलब आपका जूलॉजी मतलब लालन? हाँ यार, लालन कॉलेज सर, मेरा मास्टर हाँ हाँ, वहाँ से राइट राइट, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से है। ओके ओके, लालन में कर रहे हो ना पीएचडी अभी? हाँ यस सर। ओके ओके। तो देखो ये जो इसने 2 पेपर बनाया, डेजर्टेशन किया, उसने मानो कि नहीं किया अलग चीज है, वो इसने किया है, उस 2 पेपर बनाए। आप किसी के साथ भी आप डेजर्टेशन करके बनाए, जैसे आपके एमएससी आप कच्छ यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो उसमें भी डेजर्टेशन करवा रहे हैं, आप देखना, लेकिन उसकी जो रीत है वो थोड़ी अलग है, वो कहीं इंडस्ट्री में भेजते हैं, राइट, बहुत सारे सर के अंडर में करते हैं, लेकिन वो पेपर पब्लिकेशन तक नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ थीसिस लिख देते हैं ऐसे ही। वो वर्क है, वो वर्क को हमें पेपर पब्लिकेशन तक पहुंचाना है। आप डेजर्टेशन करते हो फिर भी आप पेपर पब्लिकेशन कर सकते हो, आप सिंपल कंपाउंड ऐसे बनाया है, उसका भी आप आईआर लो, एनएमआर लो, मास लो, और सभी चीज लेके आप उसमें आगे करोगे तो आपको 100% आएगा। आप जूलॉजी है तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी चीज आती है वो सभी चीज आप प्रूफ इकट्ठा करके आप पेपर बना सकते हैं। लेकिन ये सब चीज ऐसी है कि आपको पेपर पब्लिकेशन के बारे में पता है पीएचडी के पहले, तो आपका पेपर पब्लिकेशन जल्दी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, क्राफ्ट एंड क्लियर फोकस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन दैट्स ड्राइव टू इन्वेस्टिगेशन। ये जो आपके क्वेश्चन है ना, वो आपको फोकस करेगा, आपका रिसर्च जो है उस पर फोकस करेगा, क्योंकि क्वेश्चन होना जरूरी है कि आज मैं इतना काम किया है तो अभी ये काम करूंगा, तभी ये मेरा वर्क है वो 1 साल में खत्म होगा, उसके बाद हम पेपर राइटिंग करेंगे, और पेपर राइटिंग होने के बाद हमारा पेपर बनेगा और अच्छी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश होगा, राइट, पेपर पब्लिश होगा, उसके बाद हम कहीं अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, तभी वो चीज हम मांगेंगे तो हम देंगे कि इसमें हमने पेपर पब्लिश किया हुआ है, राइट, ये चीज खास जरूरी है। और कितने लोगों को पता है कि इम्पैक्ट फैक्टर मतलब क्या? इम्पैक्ट फैक्टर मतलब क्या, कितने लोगों को पता है? सेकेंड आई। इम्पैक्ट फैक्टर मतलब क्या? कोई भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मतलब क्या है? ठीक है, देख आपको सवाल हेलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस आपको सिर्फ बताना है कि सर इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब ये है, और हम सुना, सिर्फ दीप दीप बोलिए। अजय सर, सो फॉर सपोज कोई जर्नल है जो अपने एक कैलेंडर ईयर में टोटल 100 पब्लिकेशन कर रही है, और वो जर्नल के 100 पेपर कहीं और जर्नल में और कहीं और भी पब्लिशिंग हाउस में 1000 बार साइट होते हैं। साइट हाँ, हो, हाँ हाँ, तो हाँ। 1000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पब्लिकेशन, सो हम उस पे ऊपर से हमको मिल जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर, जो वो पर्टिकुलर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा। बराबर है। देखो अभी ये जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब आप देखोगे तो सभी जर्नल के, राइट, कोई ये इसको मार्क करना पड़ता है, बराबर, अलग अलग थॉमसन राइडर है, बहुत सारी जर्नल है, देखो एल्सफेयर है, एल्सवेयर की बहुत सारी जर्नल है, तो इम्पैक्ट फैक्टर वहां पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है खास, देखो ये पॉइंट नहीं है मेरे पास, लेकिन ये भी समझना है कि भाई हमें कौन सी इम्पैक्ट फैक्टर सही है। देखो आप बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर देखना, जर्नल में लिखा होगा इम्पैक्ट फैक्टर 6.7, लेकिन बाजू में लिखा हुआ है ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये सभी जो इम्पैक्ट फैक्टर है ना, वो इम्पैक्ट वाली जर्नल नहीं है, वो ओरिजिनल जर्नल नहीं है, वो ऐसे ही बनाई हुई है, ऐसे ही लिखा हुआ है। आप पेपर पब्लिश भी आपका हो जाएगा,
और आपको बाद में पता चलेगा कि आपका जो वर्क है वो आपने ऐसे ही डाल दिया। वो चीज भी आपको अभी आपके सामने आएगी कि भाई ये पेपर पब्लिकेशन के लिए हमें जर्नल कौन सी चूज करना है वो खास इंपॉर्टेंट है। जर्नल कौन सी चूज करना है वो खास इंपॉर्टेंट है। देखो इसके नीचे लिखा, इंश्योर दैट योर रिसर्च क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड एंड मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। ये जो पॉइंट है ना, टाइम बॉन्ड, वो सब कहानी है, ये मेन कहानी है। देखो ये पीएचडी में आपने एडमिशन लिया, लेकिन ये टाइम बॉन्ड वाली जो कहानी है ना वो आपको रुलाएगी, याद करना मुझे। क्यों? क्योंकि आपका वर्क तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्क हो रहा है और समय भी जा रहा है, लेकिन एक समय के साथ जो आपको चीज चाहिए वो नहीं मिलती है ना, तो लास्ट में आप ये टाइम बॉन्ड वाली, तो यहाँ पे स्मार्टनेस वाली कहानी आ जाएगी। क्योंकि टाइम के साथ खत्म नहीं हुआ आपका काम, तो आपको समय तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वो समय जो है वो आपको दर्द देने वाला है। और हर एक स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ हर एक स्टूडेंट जो है ये टाइम बॉन्ड की जो कहानी है उसमें रोता ही है, क्योंकि उसका समय के साथ उसका वर्क खत्म नहीं होता है, तभी उसकी तकलीफ। तो आप लोगों को ऐसा ना हो, इसलिए खास ध्यान रखना है कि टाइम बॉन्डिंग, बराबर। कंसिडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड implication of the addressing your research question in this field of the chemistry। ये केमिस्ट्री का जो फील्ड के जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन पहले हुआ है और आप उसमें रिसर्च करते ही जा रहे हो, तो उसमें वो चेंज नहीं होने चाहिए, राइट। उसके बाद का जो पॉइंट है वो डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कोई भी, अभी आपको जो भी कंपाउंड के जो भी बनाना है, आपके पास कुछ भी है नहीं, राइट, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कुछ तो तैयार करना पड़ेगा ना, कि भाई ये स्ट्रक्चर है, उसमें से हमें ये स्ट्रक्चर बनाना। ये सब क्या है, वन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है, वो पूरा बेस तैयार करना है। तो इसमें लिखा है फॉर्मुलेटेड ऑफ द टेस्टेबल हाइपोथेसिस बेस ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड स्टेट ऑफ एक्सपर्ट एंड आउटकम योर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे करते हैं। देखो आज हमने एक रिएक्शन लगा दिया, आज हमने एक मेथड बना लिया आर्टिकल में, राइट, लेकिन एक मेथड से आपका पीएचडी खत्म होने वाला नहीं, राइट। अभी ये वो बना ली, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन भी करना है कि आज हमने जो ये काम किया है उसमें इतना परसेंटेज बना है और ये चीज बनी है, तो इसके साथ ये इम्प्योरिटी भी नहीं है, इम्प्योरिटी है क्या वो भी आपको दिखाना है, क्योंकि पेपर में ये सभी चीज आती है जब आप ना। उसके बाद आता है जस्टिफाई योर हाइपोथेसिस विथ रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड साइंटिफिक रीजनिंग, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस है, मानो कि आपने कुछ भी हाइपोथेसिस किया है, मतलब ऐसे ही सोचा है कि ये सब चीज ऐसे ऐसे करेंगे, राइट, तो वो आपके रेफरेंस के हिसाब से होनी चाहिए। आपने जो रेफरेंसिंग किया है उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब आपने कोई एक कंपाउंड ए में से कंपाउंड बी बनाना है, राइट, ये कंपाउंड ए में से बी बनाना है, लेकिन ए में से बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ही आपने बीच में डाल दिया कि डी और सी उसके रिएजेंट है, राइट, ए में से बी बनाना है, डी और सी उसके रिएजेंट है, लेकिन वो डी सी रेफरेंस जो आपके है उसके हिसाब से आपका डी और सी यूज किया हुआ कहीं ना कहीं मिलना है। लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं तभी आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, मतलब जो आपने लिटरेचर किया है वो उसके हिसाब से होने चाहिए, साइंटिफिक रीजंस होना जरूरी है। हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं करना है, ये आर्ट्स की जो कहानी है ऐसे नहीं चलती है, राइट, ये साइंस का है। उसके बाद डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड। अभी हमने हाइपोथेसिस कर लिया, उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर किया है, तो उसमें हम प्लान करेंगे, राइट। तो लिखा है देखो, प्लान एंड डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ प्रोसीजर एंड वी विल यूज टू एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपको यूज करना है, कि जो एक्सपेरिमेंटल करते हो वो हाइपोथेसिस किया हो, अभी एक्सपेरिमेंटल करोगे और उसके बाद सही है नहीं। लेकिन फर्स्ट क्या आता है, सेफ्टी। तो आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें सेफ्टी कंसिडरेबल होनी चाहिए, इथिक्स, मतलब आपकी जो नीति है, गाइडलाइन है, वो भी जरूरी है, बहुत सारी चीज। तो आप जानते हैं सर इसमें इथिक्स की क्या जरूरत है, इथिक्स जरूरी है बहुत सारे। आप कंपाउंड ऐसे यूज करोगे कि आपने कभी किया नहीं है, वो लीगल कर नहीं सकते, लेकिन आप रिसर्च के लिए वो मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कंपाउंड कहीं और यूज करो,
लाइक दैट आपने इथेनॉल यूज करना है और इथेनॉल का डब्बा ले लिया और कहीं और भी इथेनॉल यूज करते हो तो ये गलत है, राइट। तो मतलब इथिक्स जो गाइडलाइन है रिलेवेंट योर रिसर्च वर्क, वो सब चीज जरूरी है, राइट। उसके बाद आपको कलेक्टिंग एंड एनालिसिस डाटा, अभी खास चीज आई है कि अभी आपका जो कंपाउंड जो है वो सब कुछ बन बात डाटा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो आपकी डिजाइन की थी आप एक्सपेरिमेंटल, इसके हिसाब से डेटा है कि नहीं। तो रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज योर डाटा सिस्टमेटिकली, एक वन टाइप ऑफ आपका डाटा ऑर्गेनाइज करना है सिस्टम से, बराबर। यूज द appropriate the statistical and analytical method to analyze the data and draw conclusion, उसके वो कंक्लूजन पे आप जा सकते हो। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, ये सभी जो आपको मिले हैं डेटा वगैरह बहुत सारी चीज मिली है, उसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना है, बराबर। हाइपोथेसिस के हिसाब से जो मिला है, एक्सपेरिमेंटल हिसाब से मिला है, हाइपोथेसिस के हिसाब से है कि नहीं है, आपने लिटरेचर किया है जैसे लिटरेचर के हिसाब से है, कंपेयर करना है रिजल्ट को कि भाई आपने लिटरेचर किया उसके हिसाब से है, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से है, एक्सेप्टेशन है कि नहीं साइंटिफिक, सभी चीज। उसके बाद आता है राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ये चीज खास है कि इंट्रोडक्शन आप कभी भी, मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं पेपर जब डालता हूँ तभी उसमें जो गलती आती है वो ज्यादा तकलीफ कहाँ पे आती है पता है आपको, एक्सपेरिमेंटल में कभी नहीं आती, राइट। सभी जगह पे एक ही जगह पे आती है, वो क्या है, इंट्रोडक्शन में आती है। कि इंट्रोडक्शन में आपने जो किया है वो एक शॉर्ट कीजिए या तो लॉन्ग कीजिए, या तो इसमें परफेक्टली चीज है वो 99% दिखनी चाहिए जो आप कर रहे हो, वो सभी चीज, वो राइटिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन मेन पार्ट होता है आपका जो पेपर पब्लिकेशन है उसमें। प्रोवाइड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर केमिस्ट्री रिसर्च टॉपिक, आपका जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड जो है, जो कहना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे होना जरूरी है। ऑफ योर स्टडी, मतलब आप जो हाइपोथेसिस हिसाब से जो स्टडी कर रहे हो उसके जो क्वेश्चंस है वो सभी चीज आपको झलक, उसकी जो झलक है वो इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। एक्सप्लेन बड़ी बात यह है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना आपका, हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन 2 पेज का बना दे, ऐसा नहीं चलता है। इंट्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लाइन का होता है, उसमें आपको सभी चीज बिठा के देना है उसको। जैसे हम बोलते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे तो सर ये तो कंक्लूजन हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन भी एक ऐसा पार्ट है कि वो सभी चीज बिठा के देना है, उसमें रेफरेंस वो सब चीज डालना है, और 10 लाइन में आपको वो एडजस्ट करके इंट्रोडक्शन, ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करना है कि सामने वाले जो रेफरी है वो देखे, उसके बाद उसको समझ में आएगा ना ये परफेक्ट है वो सभी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग द मेथड एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, मतलब आपका जो रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट करते हो आप, experimental method or the processing in your study, include the detail of or material instrument and technology employed, मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। इंश्योर, मतलब आपका पेपर में भी आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में काम किया है, मानो कि आपने 1 HNMR किया, राइट, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में किया, जैसे आप जानते हो कि अभी आपको सभी चीज मांगते हैं कि भाई आपने 1 HNMR किया तो कहाँ पे किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट में किया, कितने मेगाहर्ट्ज के है, वो सभी चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। आपके रिपोर्ट जो आप रिजल्ट करते हो तो उसमें मेथड जो भी है उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी लिखना पड़ता है, बराबर। इंश्योर द क्लियरिटी ऑफ द प्रोडक्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट sufficient information for the other researcher and reflected your experiment, आपके एक्सपेरिमेंट दूसरे जो रिसर्चर है उसकी जरूरी है आपके यर्स, ये सभी चीज आपको देना है। जानते हैं कि भाई टेबल्स, ग्राफ और फिगर्स तो आने ही है, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा हम लिखेंगे, इससे ज्यादा हम किस में करेंगे, टेबल्स में देंगे, ग्राफ्स कर देंगे, फिगर कर देंगे, बराबर। तो वो एक क्या हुआ कि वो ऐसा ही हुआ, बराबर, कि provide the clear and conclude the description your the finding and highlight any pattern and trends and significant observation in your data। ये सभी जो आपने डेटा किया है वो कोई
ट्रेंडेबल है, मतलब कोई जो ट्रेंड हो रहा है उसके हिसाब से वो भी आपको दिखाना है, हाईलाइट करना है, कोई पैटर्न के हिसाब से वो भी हाईलाइट करना है। इससे आगे वाला जो है टॉपिक वो है डिस्कस द फाइंडिंग एंड राइटिंग द कंक्लूजन। ये कंक्लूजन की बात है। तो कंक्लूजन मतलब पूरा जो आपने पेपर बना दिया उसके बारे में 5-6 लाइन में लिखना है कि ये सभी चीज है वो वही है। और कोई भी रेफरी है वो ज्यादा 2 चीज देखता है, एक इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, और तीसरी चीज है वो कंक्लूजन। बराबर, कंक्लूजन कैसा है, कंक्लूजन से आपको पता चलता है कि आपके पूरे पेपर में जो आपने किया है वो चीज क्या है। पहले इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि ये पर्पस किसके लिए पेपर किया हुआ है और कहाँ से ये चीज है वो। बराबर, एब्स्ट्रैक्ट में भी ये एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा पार्ट है कि शॉर्ट, जैसे इंट्रोडक्शन का एक शॉर्ट पार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और पूरा पेपर एब्स्ट्रैक्ट मतलब पूरा एब्स्ट्रैक्ट करके जो अभी वो आएगा मेरे यही आपका पीपीटी में एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, क्या है उसके अंदर, वो सभी चीज आपको। ये खास कि अभी आपने पेपर तो लिख दिया, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, मानो कि 10-15 रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस कैसे होने चाहिए। तो भाई रेफरेंस का लिस्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि भाई हमने अभी आज 2024 में हमने पेपर राइट चाहिए, 22 के भी 4-5 होने चाहिए, ऐसे ही रेफरेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2005 के ही सभी रेफरेंस डाल दिए तो ऐसा चलता नहीं। तो रेफरेंस भी उसकी स्टाइल भी होनी चाहिए। देखो, फॉलोइंग द स्टैंडर्ड साइटेशन स्टाइल सच एज एसीएस, एपीए एंड एमएलए, ये स्टैंडर्ड है जो भी आपकी जनरल मांगते हैं उसके हिसाब से आपको ये रेफरेंस का स्टाइल आपको रेफरेंस में करना पड़ता है। वो तो सबको वैसे भी पता ही रहता है। सभी आप कोई भी स्टाइल में रेफरेंस आप जर्नल में डाल के, सॉरी पेपर में डाल के जर्नल में आप पब्लिश नहीं कर सकते। वो वापस आपको रिवाइज करेंगे कि भाई ये जो आपका स्टाइल है वो हमें। देखो, अभी जो बात है एब्स्ट्रैक्ट, the structure of a research paper, main part of the composition, introduction, body and conclusion। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो, उसके बाद सेकंड क्या है, बॉडी, मतलब पूरा जो अंदर जो पेपर है वो, उसके बाद कंक्लूजन आता है। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, लिटरेचर है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन, रेफरेंस, जो हम आगे देखते आए हैं वही चीज है, राइट। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर में पर्पस में एब्स्ट्रैक्ट, द ब्रीफ इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन तो हम है ही आगे, देखो फिर भी लिखा है, क्या लिखा है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द रीडर टू द एम्स एंड स्टडी द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिजल्ट एंड फाइंडिंग। मतलब आपने कोई भी चीज, मानो कि आपने ऑर्गेनिक में एक पेपर बनाया, उसमें 10 कंपाउंड है अंदर, तो वो 10 कंपाउंड कौन सी एक्टिविटी में आया है वो चीज 2-4 लाइन, और इंट्रोडक्शन मतलब इसमें आपने कौन सा कंपाउंड कैसे बनाया है और उसके कंपाउंड में कितनी मॉलिक्यूल डॉकिंग किया है, तो उसका मॉलिक्यूल डॉकिंग किया और मॉलिक्यूल डॉकिंग में ये पार्ट एक्टिव आया है, वो सभी चीज आपको दिखाना, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है शॉर्ट में, राइट। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू स्टेट ए क्लियर ओवरऑल पर्पस फॉर द स्टडी एंड ऑफन द फ्रेम ऑफ to 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 define the research question of the study, to give the very brief background or relevant theory and practice for your topic। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, तो कि ये 2-4 चीज इसमें खास है इंट्रोडक्शन में, कि भाई ओवरऑल आपका पर्पस क्या है वो इंट्रोडक्शन में लिखना है। जो आपके 2-4 रेफरेंस जो करंट रेफरेंस है, उसके बाद आगे वाले जो भी आपको जाएंगे ईयर में उसके रेफरेंस जो है उस, और आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से जो आपने लिटरेचर किया है वो लिटरेचर में से जो आपने उठाया वही चीज लिखने है, और ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना है कि आपने जो भी कंपाउंड जो भी थियरी जो अंदर रिलेवेंट है उसकी प्रैक्टिस जो की है वो टॉपिक आपको टॉपिक के हिसाब से लिखना है। उसके बाद आएगा लिटरेचर रिव्यू, टू समराइज द कंक्लूजन हैव बीन द रिच इन दिस द रिसर्च लिटरेचर एंड वेदर द डिफरेंट राइटर एंड एग्री और नॉट, हाईलाइट मेन इश्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या था, तो मेन इश्यू एंड कंट्रोवर्सी अराउंड दिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसमें मेन इश्यू और उसकी कंट्रोवर्सी आपको लिखनी है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है मेथोडोलॉजी। बराबर, मेथोडोलॉजी में जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग चीज आएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रीम जो अलग अलग है उसमें ऑर्गेनिक है तो अलग आएगा, वो सभी चीज में अलग आएगी, राइट। रिजल्ट, तो रिजल्ट के हिसाब से फाइंडिंग योर रिसर्च इन ऑर्डरिंग एंड मैनर यूजिंग हेडिंग एंड
planned in your methodology and handling and arising from the patterns from these research। मतलब एक रिजल्ट एक ऐसी चीज है कि भाई आपको कोई भी सब्जेक्ट, मानो कि आपने मॉलिक्यूल डॉकिंग के बारे में पेपर लिखा है, राइट, तो उसके बारे में रिजल्ट आपको जो देखना है, तो उसका भी रिजल्ट जो भी है मॉलिक्यूल डॉकिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद उसका जो भी फाइंडिंग में जो भी योर रिसर्च जो है उसका रिजल्ट आएगा, वो शॉर्ट में आपको रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ये पार्ट एक रिजल्ट का एक ऐसा पार्ट आता है कि ये कंबाइन आता है ज्यादातर, डिस्कशन एंड रिजल्ट, ये दोनों चीज साथ में आते हैं। देखो नीचे लिखा है डिस्कशन, कि भाई रिजल्ट की जो डिस्कशन करते हैं वो सब चीज आपको एक पॉइंट में आ जाते हैं। बहुत सारी जर्नल में अलग आता है और बहुत सारी जर्नल में साथ में आ जाता है। ये बहुत सारे पार्ट मैंने दिखाया, देखो पहले से एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट है वो सभी जर्नल में आएगा, इंट्रोडक्शन सभी जर्नल में, मेथोडोलॉजी है वो सभी जर्नल में आएगा। बहुत सारे में मेथोडोलॉजी, उसके साथ लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद रिजल्ट डिस्कशन वो साथ में आ जाता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो कंक्लूजन वो सभी में आएगा, वो अलग पार्ट आएगा कंक्लूजन, बराबर। उसके बाद आता है रेफरेंस, a list alphabetical all the reference material and that have been beside the text of the report, वो इसका अल्फाबेटिकल हिसाब से लगाना है। ये सब चीज आपको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो आपको करना कैसे है, तो कि भाई कोई भी जर्नल आपको देते हैं, वो जर्नल का एक पेपर निकालना है, उसमें देखना है कि भाई उसमें रेफरेंस कैसे, उसमें कौन सी स्टाइल से लिखे हुए है, वही स्टाइल से आपको उसको लिख के देना पड़ेगा, राइट। देखो तो इसमें आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, it is to summarize the body of the information and express the main claim and argument of a paper, इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, बराबर। हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट, बराबर। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट के, व्हाट डिड यू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट, आपका स्टडी क्या है, वो आपका प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट डिड यू, व्हाट डू, हाउ एंड व्हाट डिड यू फाइंड एंड व्हाट डिड यू फाइंडिंग मींस, बराबर। फाइंडिंग मींस मतलब आप कैसे, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप कैसे करोगे, उसको कैसे फाइंड किया है और कैसे आपने कंक्लूड किया है, वो सभी चीज एब्स्ट्रैक्ट में दिखनी चाहिए। कोई भी आप पेपर ले लो तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट पहले दिखेगा, अभी हम देखेंगे ऑनलाइन करके, बराबर। देखो इसमें और आएगा इंट्रोडक्शन, the primary purpose of the introduction is the frame and paper for this reader, it is should be provide brief description on the topic, brief description of the topic, statement of the why the topic of the broad researching and why did could to found the interesting, right। statement or the other research object जो हमने आगे is scope of the study and overall is the rest of the paper, मतलब पूरे पेपर का जो कंक्लूजन का जो है और पेपर जो लिटरेचर रिव्यू सभी किया है उसके बारे में होने वाला है, राइट। कौन सी ड्रग्स के नजदीक है, कौन से एक्टिविटी जो है, वो सभी चीज आपको इंट्रोडक्शन में डालना है। लिटरेचर रिव्यू भी आपको दिखा है, for guide question, what is the present state of the knowledge and regarding this topic under the consideration, how are you the study of the related, and one being the purpose, what is the quality of the study and the revise, how will you purpose study and contributed to the existing literature। ये लिटरेचर पार्ट तो आपने अभी तक खत्म कर लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ, तब तक आपको लिटरेचर पार्ट अभी देना भी होगा कि आपका गाइड मांगेंगे कि भाई हमें लिटरेचर रिव्यू करके दो, तो आप सभी लिटरेचर रिव्यू करोगे भी। तो इसमें खास याद रखना कि लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, क्या हिसाब से आप क्या करोगे वो भी मुझे पता है। आप एक दूसरे में से उठा दोगे, आगे जो स्टूडेंट ने किया है वही दे देंगे और सब लोग आपको वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे पता है, कि आगे वाला है वो उठा लो, उसमें आपका नाम चेंज करो और आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से 2-4 चीज का रेफरेंस है वो ले लो। तो फिर क्या, तो भाई हम मेरा कंपाउंड है कि भाई ये स्किप बेस के बारे में बनाया है, तो स्किप बेस के बारे में थोड़ा कुछ लिख के उसका रेफरेंस नीचे डाल दो। लेकिन मैं समझ रहा हूँ तब आपको लिटरेचर रिव्यू है वो एकदम परफेक्ट करना चाहिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं समझ रहा हूँ 10 दिन तक आप सही तरीके से करोगे ऑनलाइन लिटरेचर रिव्यू, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और मिनिमम आपके पास ये जो पीडीएफ जो है, अलग अलग पेपर जो आपके टॉपिक के बारे में, मिनिमम मैं समझ रहा हूँ तो 250 के आसपास होनी चाहिए। और 250 पीडीएफ में से आप 50 पीडीएफ आप चूज करना है, उसमें से आपको उसके लिटरेचर रिव्यू है वो बनाना है, बराबर। उसके लिटरेचर रिव्यू है बनाना और आपकी गाइड को देना है, जो आप गाइड मांगे तो
उसके बाद मेथोडोलॉजी आती है। मेथोडोलॉजी में आपको ऑर्गेनिक में अलग आएगी और एनालिटिकल सभी जो पार्ट है उसमें अलग है। फिजिक्स वाले है तो उसके अलग है, जूलॉजी वाले है तो उसको भी मेथोडोलॉजी का। लेकिन इसमें मेन पार्ट ये है कि डाटा कलेक्शन होना चाहिए। देखो लास्ट, ठीक है ना, टू एक्सप्लेन द जस्टिफाई द मेथड और डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये जो है आपका मेन पार्ट है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। क्या आता है कंक्लूजन? द रिजल्ट एंड डिस्कशन, जैसे मैंने बोला रिजल्ट एंड डिस्कशन शुड बी द फोकस ऑफ दिस पार्ट। ये रिजल्ट एंड डिस्कशन जो भी हुआ है उसमें आपका जो मेन पार्ट आएगा, उसमें लास्ट में जो लिखना है कंक्लूजन के, भाई ये जो आपने 10-15 कंपाउंड बनाया उसके बारे में सब कुछ लिख दिया, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में लिखना है कि कौन सा पार्ट है वो एक्टिव है और किस लिए एक्टिव है, उसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है उसके लिए वो एक्टिव हुआ है, और ग्रुप के साथ में बाजू में कौन सा ग्रुप है इसलिए ये एक्टिव हुआ। वो सभी चीज आपको यहाँ पे लिखने हैं। मतलब आपका जो कंक्लूजन है वो आपका रिजल्ट का सारांश, आपका पेपर का सारांश। देखो कंक्लूजन में दो चीज आती है, रिजल्ट एंड डिस्कशन। जैसे मैंने बोला रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन में दो पार्ट आता है। उसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंसिंग योर पेपर, रेफरेंस नीड टू कंटेन ऑल वर्क साइटेड इन द नेक्स्ट। खास अभी जो रेफरेंसिंग जो है वो, जैसे हम पेपर बहुत सारे बनाते हैं वो इसमें कहीं से उठा के 10-15 रेफरेंस ऐसे डालते नहीं। वो रेफरेंस जो है उसको भी आप क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट रेफरेंस के ऊपर भी DOI नंबर आपको डालना पड़ेगा। 10 रेफरेंस आपने मानो के पेपर में डाला है, राइट, तो उसमें भी आपको DOI नंबर डालना पड़ेगा। DOI नंबर पे क्लिक करें तो वो रेफरेंस खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरा पेपर खुलना चाहिए। वो रेफरेंस जो भी डाला है आप DOI नंबर क्लिक करोगे तो आपका उसका लिंक जो है वो खुलेगी, और लिंक में जो भी आपका रेफरेंस डाला है वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है। एक खास जो चीज आई है, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। देखो ये खास चीज आई है प्लेगरिज्म। ये चीज से कितने लोग इसको गंभीरता से लेते हैं? मैं सबसे ज्यादा गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी वैसे बोलते हैं तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, और ये सब चीज ऐसे ही हो जाती है। लेकिन ये प्लेगरिज्म एक ऐसी चीज है कि आप अभी ये सबसे बड़ी चीज आई है वो AI, राइट, आर्टिफिशियल जो है AI की बात कर रहा हूँ, राइट। GPT आप यूज करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। करते हैं ना आप चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, आप एक टॉपिक डालना, राइट, एक टॉपिक डाल के आप बोलोगे कि इसके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन लिख दो, तो वो फटाफट लिख देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटेड आपको वो फटाफट चैट जीपीटी से इंट्रोडक्शन लिख देगा। आप बोलोगे कि इसका जो कंक्लूजन है, इसमें आपको एक टॉपिक डालना है, उसमें लिखना है कि ये 3A कंपाउंड है वो हमने फुल्ली एक्टिव है, और बाकी के जो कंपाउंड है इनएक्टिव है, और स्टॉप करके इसमें लिखना है उसका कंक्लूजन, आई वांट ए कंक्लूजन दिस टॉपिक, राइट, ऐसा लिख दो ना। आप करना ये सब चीज, मैंने किया हुआ है सब, तो वो कंक्लूजन भी लिख देगा। लेकिन इतना याद रखना, ये सभी जो है ना, चैट जीपीटी है, दूसरे बहुत सारे AI आप जानोगे तो जितने ढगलो के तो छे, बराबर, तो वो सभी जो है वो सभी जो आप एक बार जाओगे तो अटकोगे कहाँ पे पता है? आप कोई भी जर्नल में डालोगे तो वहां पे वही बोलेंगे कि आपका जो पेपर है प्लेगरिज्म में है, बहुत 70% किसी की सिमिलरिटी में है। कितना डालेंगे? 70% किसी सिमिलरिटी आ रही है। आप देखना, ये सब चीज करके देखना, तभी आपको पता चलेगा। इसीलिए आप ये चीज है वो गंभीरता से लेना है पेपर पब्लिकेशन में खास, क्योंकि आपका पेपर कितना भी अच्छा है, अपने कंपाउंड कितने भी अच्छे बनाए, आपने मेथड एनालिटिकल कितनी भी अच्छी है, जूलॉजी में आपने वर्क किया एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपका जो लिखने वाली कहानी है वो सही नहीं है, तो ये प्लेगरिज्म आपको आपके सामने आ जाएगा और पेपर फटाक के रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी जर्नल में आप डालोगे तभी आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट टारगेट जर्नल, मेन पार्ट जो लास्ट वाला आता है कि भाई कोई भी जर्नल में आप पेपर डाल दोगे, ऐसे पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप डालोगे तो बोलेंगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है वो हमारे जर्नल के रिलेटिव नहीं है, तो हम आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम रिव्यू करने के लिए नहीं आगे जा सकते। तो ये सभी चीज खास जरूरी है कि कोई भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नल कौन सी है, उसमें खास ये चीज बराबर कि आपको जो भी जर्नल में डाल रहे हो उसके हिसाब, आपके टॉपिक के हिसाब से ही होना चाहिए। दूसरा कि भाई आप जो भी जर्नल में डाल रहे हो UGC अप्रूव्ड जर्नल होनी चाहिए।
कितने लोगों को यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल के बारे में पता है? तो भाई कौन सी जर्नल है वो यूजीसी अप्रूव होगी? पता है किसी को? मैं आपको बताता हूँ यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल कौन सी है। खास करके यूजीसी अप्रूव जर्नल के लिए आपको यूजीसी वेबसाइट पे जाना है, जैसे यही सब लोग बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपल कि यूजीसी अप्रूव जर्नल के लिए यूजीसी की वेबसाइट में जाना ही है। लेकिन उसमें केमिस्ट्री की है या तो फिजिक्स की है या तो जूलॉजी की है, बहुत कम जर्नल है यूजीसी अप्रूव। तो क्या दूसरी कोई जर्नल है वो यूजीसी अप्रूव नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो उसमें और भी एक लिस्ट दिया है, स्कोपस 1, स्कोपस 2, राइट। तो उसमें जो एल्सवेयर की मैं समझता हूँ तब तक 95 99 जर्नल जो भी है एल्सवेयर की है, आप साइंस डायरेक्ट की जो है जर्नल, वो सब भी जर्नल जो है वो सब क्या है? यूजीसी अप्रूव जर्नल है। क्या है? यूजीसी अप्रूव जर्नल है। क्योंकि यूजीसी अप्रूव जर्नल में आपको अप्लाई करेंगे वो लोग तो यूजीसी अप्रूव होगी, लेकिन उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अप्लाई करते हैं उसको यूजीसी अप्रूव जर्नल देते हैं, राइट। नहीं करते उसको नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजीसी अप्रूव नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड जर्नल है। कोई आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम निकालेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे 1500 रुपया 1200 रुपया में लेके जर्नल जो पब्लिश करते हैं, बराबर, पेपर, ऐसी जर्नल जो है वो कोई, मैं समझ रहा हूँ तब तक ऐसी जर्नल आपको चूज नहीं करनी चाहिए। अभी आपको लिस्ट ऑफ जर्नल्स देखो, साइंस की लिस्ट ऑफ जर्नल देखोगे तो ये सभी चीज आपको, ये पीपीटी चाहिए तो मैं भेज दूंगा गौरव सर को, आप ले लेना। नेचुरल केमिस्ट्री के बारे में है, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक लेटर है, बहुत सारी जर्नल है, राइट। तो ये सभी जर्नल आप देख सकते हो और उसमें आपका पेपर पब्लिकेशन करना है तो ऑर्गेनिक वाले के लिए खास है। मैं ऑर्गेनिक का हूँ तो मैंने ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे जर्नल निकाला है। मेरे भी पेपर है बहुत सारे। वैसे तो मेरे पास जो मेरे पेपर 31 पेपर, तो सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. वैसे मेरे, हाँ वैसे मेरे पब्लिकेशन, जैसे मैं बोलते हैं कि आपकी तरह जब मैं पीएचडी में था तो 2 ही पब्लिकेशन थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन किए हैं। 31 पब्लिकेशन है टोटल मेरे। उसमें अच्छी जर्नल में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई इम्परफेक्टर वाली जर्नल, अच्छी जर्नल, वो उसमें 11 पेपर उसमें है। बाकी सब नॉर्मल जर्नल है, इंडियन नॉर्मल जर्नल है, उसमें पेपर है। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी भी जर्नल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ रिसर्च, ये बेस्ट जर्नल है इम्परफेक्टर, इसका आई थिंक 3.8 के आसपास है, बराबर। एक रसायन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री है, ये जर्नल ऑफ केमिकल फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी जर्नल है, राइट। ये सभी जर्नल आपके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। जूलॉजी वाले हैं उसको भी बता दूं भाई, नाम क्या था, दीप, दीप भाई, राइट। आपके लिए यस ये सर। भी जर्नल ऑफ एडवांस जूलॉजी है, वो भी एक अच्छी जर्नल है। उसमें भी मेरे फ्रेंड के साथ मैंने एक पेपर पब्लिकेशन किया था, राइट। तो ये बहुत सारी जर्नल है। तो भाई जो एक पेपर पब्लिकेशन जो मेरा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। पेपर पब्लिकेशन है ना, वो आपका एक मेन पार्ट है ना, याद रखना। पेपर पब्लिकेशन जो अच्छी तरह से करोगे तो आपकी जर्नल जो भी है, लेकिन आपका पेपर पब्लिकेशन बेस्ट रहेगा तो आप कहीं पे भी कोई भी सर्विस करने के लिए जाओगे, प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, वहां पे आपका इसका इम्पैक्ट और उसका परसेंटेज भी ज्यादा गिना जाता है, राइट। इसका इम्पैक्ट और परसेंटेज भी ज्यादा गिना जाता है। देखो ये जो एक पेपर लेते हैं, आप ऐसे भी, ये जो सर है वो सब भी जानते हो, पावेश डोडिया सर, ये इसको भी जानते ही होंगे आप, राइट। ये मेरा नाम है, इसके अंडर में पीएचडी जो किया था वो जानकी चौहान करके थी लड़की, जो अभी पीएचडी किया। ये केमिस्ट्री सिलेक्ट नाम की जो जर्नल है उसमें एल्सवेयर, ये वेली की जर्नल है, वेली भी एक एल्सवेयर की तरह ही है, बराबर। तो ये इसमें आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ना वो इंट्रोडक्शन, ये एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है, राइट। बहुत बहुत कम है पार्ट एब्स्ट्रैक्ट का। पर देखो इंट्रोडक्शन भी इतना ज्यादा नहीं है, इंट्रोडक्शन भी इतना ज्यादा नहीं है। देखो ये कंपाउंड जो बनाए हैं वही, देखो कंपाउंड
ऐसे भी आप बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, राइट? ऑर्गेनिक वाले भी इसमें बहुत सारे होंगे। तो आप कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड कैसे है, उसके बाद ये कंपाउंड के बाद उसका जो एनालिसिस और उसके अंदर की दूसरी चीज क्या करते हैं वो खास देखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कॉमन अभी जो इंडिया में हो रही है, ये एडीएमईटी डाटा, तो उसमें बहुत सारे एडीएमईटी डाटा डाले हुए हैं, वो आपको ये सभी चीज कर सकते हो आप, रिसर्च तो करना है उसमें। जैसे ग्राफ, जैसे मैं बोला टेबल ग्राफ, तो ये सभी ग्राफ टेबल वो सब चीज रहती है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट डिस्कशन जैसे आता है, तो रिजल्ट और डिस्कशन क्या करेंगे, उसमें भी आपका टेबल और ग्राफ सभी चीज आएगी। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बारे में आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। मॉलिक्यूलर डॉकिंग मतलब ये जो कंपाउंड जो है ये सिप्रोफ्लोक्सासिन, देखो आपको सामने ये जो मैं कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन का मॉलिक्यूलर डॉकिंग किया है और हमारे उसके साथ उनके साथ कंपैरिजन कर दिया है, तो उसके साथ कितना कंपेयर होके वो कितनी एक्टिविटी देता है वो सभी चीज आपको यहाँ पे डाली हुई दिखाई दे रही है। हेलो, नहीं दिख रहा है? હેલો સર, તમે જે પેપર વિઝિબલ નથી. હેલો સર, તમે જે પેપર જે બતાવતા હતા એ નતું દેખાતું. નથી દેખાતું એવું? તો એક જ મિનિટ, હા. અત્યારે પીપીટી દેખાય, શું દેખાય છે? સર પીપીટી દેખાય. પીપીટી દેખાય છે બધાને? ઓકે. अब पेपर दिख रहा है? No, sir. नहीं सर. No, sir, still not visible, sir. ओके 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 ओके। हाँ, तारा को क्यों नहीं दिख रहा है? राइट, ठीक है। अभी इसमें आ नहीं रहा है, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता है। विंडोज ही चालू है, स्क्रीनिंग में तो दिख रहा है ना अभी? સર સ્ક્રીન શેર કર્યા પછી ડાયરેક્ટ તમે સર સિલેક્ટ કરો પેપર એટલે ડાયરેક્ટ શો થશે. नहीं, वो स्क्रीनिंग डायरेक्ट आती नहीं है। देखो अभी आ रही है? શેર એન્ટાયર સ્ક્રીન કરો સર. विंडोज विंडोज आ रहा है ना, उसमें उसमें नहीं आया था। क्रोम टैब आती है, उसके बाद विंडोज आता है। क्रोम टैब शेयर करता हूँ तो अभी दिखता है ना? अभी दिख रहा है ना? હા હા સર દેખાય છે હવે. अभी હવે दिख रहा है? ડાયરેક્ટ સર ઉપર હા બસ બસ દેખાય છે दिख સર. रहा है ना વિઝિબલ अभी છે सबको? યસ दिख સર रहा है? યસ સર વિઝિબલ. Yes, sir. राइट, यस सर. ओके ओके ओके। देखो ये इसका टॉपिक है ट्रायोजोलो pyrimidine and DNA gyrase inhibitor synthesis antimicrobial activity in silicon ADMET with the molecule docking study। ये जो अब मैं जो ये टॉपिक जो है, देखो ये टॉपिक के हिसाब से उसमें उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। देखो ये मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। देखो ये जर्नल के हिसाब से बन के आता है, पहले तो हम सिंपल ही लिखते हैं, वो जर्नल के हिसाब से वो बना के देता है। इसके बाद देखो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसमें खास आपको जो दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो अभी जो करंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कर रहे हैं वो लोग,
और एनालिटिकल में कर रहे हैं उसके लिए खास बोल रहा हूँ मैं कि ये देखो ये कंपाउंड जो है वो बहुत इजी है, कंपाउंड है बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको सामने जो जो काम हुआ है वो काम जो हुआ है वो मोलिक्यूल डॉकिंग, मोलिक्यूल डॉकिंग एक ऐसा पार्ट है कि अभी वो सीखोगे आपके लिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये जो पार्ट है ये देखो अभी दिख रहा है ना सबको, देखो इसमें जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर कितने लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर? देखो इसमें Yes, sir. वही हमने जो कंपाउंड, हाँ हमने जो कंपाउंड बनाया है उसके साथ वही चीज की है। सिप्रोफ्लोक्सासिन उसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, हमने जो कंपाउंड बनाया है उसका भी स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके बाद उसको जो किया है वो चीज आपको दिखा। तो ये सभी चीज आप अभी जो नई चीज है कि भाई करंट, जैसे मैंने बोला ना कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है, अभी ट्रेंड के हिसाब से आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप सिंपल सा कंपाउंड बना के या तो सिंपल सी मेथड बना के डाल दोगे तो आपका कोई पब्लिकेशन इतनी अच्छी जर्नल में होने वाला नहीं। देखो ये बेस्ट जर्नल है, ये भी जो वैली की जर्नल है बेस्ट जर्नल में पब्लिकेशन हुआ है, राइट? तो ये सभी चीज आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपको कोई भी जर्नल के लिए कौन से क्राइटेरिया आपको उसको देने पड़ेंगे। अभी पहले ऐसा था जब 2011 में पीएचडी में थे तभी ज्यादा कुछ ऐसी चीज नहीं थी और मिलता भी नहीं था। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेस्ट जो रिसर्च हो रहा है जो इट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, वो एंटी कैंसर में सबसे ज्यादा अभी हो रहा है, एंटी कैंसर के बारे में, बराबर। और हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं ज्यादातर एक्टिविटी कौन सी कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल, बराबर, ये एंटीऑक्सीडेंट वो सब कर सकते हैं नॉर्मल जो होती है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसे भी कंपाउंड बनाओ कि एक भी कंपाउंड एंटी कैंसर एक्टिविटी जो देता है ना तो आपका नाम इतना बड़ा करेगा, वो नाम आपका इतना बड़ा करेगा। जैसे सर आगे बोल के गया पोस्ट पीएचडी करना, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपका पेपर देख के आपके मेल में आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको काम मिलेगा कि आप कोई इंडस्ट्री भी आपको बुलाएगी कि भाई अब ये जो किया है वो आप मेरे वहां पे काम करो, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट लो, ये सभी चीज आएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। कभी भी पर्पज ऐसा नहीं होना चाहिए पीएचडी में कि हम ये आए हैं और काम करके निकल जाए, बराबर, जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आप ऐसे ही करके यहाँ जो बंदे आते हैं तो उसके बाद आगे क्या होगा, क्या होगा मैं बताऊं आपको, ये सब में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे अभी बहुत सारे टाइम से आप लोग स्ट्रगल करके आए हैं, राइट, पीएचडी में आपको बहुत पहले ही आपको मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। 2-3 साल से क्या चल रहा है वो सब आप सब जानते थे, बराबर। उसके लिए हमने बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन ये सभी चीज कहाँ पे होती है पता, कि हमारा जो ये बहुत सारे प्रोफेसर है, ऐसा कुछ नहीं है, जब सब प्रोफेसर साथ में आवाज उठाते हैं तो काम आपका क्लियर भी हो जाता है जल्दी। लेकिन क्या है कि ज्यादातर जैसे मैंने आपको बोला ना, आपने पीएचडी किया उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, उसके बाद एसोसिएट बन गया, बाकी दुनिया जो भी करना है वो करे, हम तो एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, 2 लाख सैलरी आ रहा है, उससे कुछ मेरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पर्पज एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम पीएचडी करते हैं तो हमारा पीएचडी का वर्क जो है वो भी एक ऐसा वर्क होना चाहिए कि वो वर्क और वो थीसिस उठा के आगे बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट काम करने चाहिए, राइट। और आपको इसमें कोई ऐसा सवाल लगे कि पेपर राइटिंग के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको दिया है और आप लोगों ने अच्छी तरह सुना, उसके लिए सबको थैंक्स। चिराग भाई। હા સર, થેન્ક યુ સો મચ સર. પહેલા તો તમે ઘણી બધી એવી નવી નવી વસ્તુઓ જે કીધી જે અમને ઘણું શીખવા મળ્યું છે એનાથી સર. સો સર, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી હું તમને સર ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું સર. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. અને કોઈને બી અગર કોઈ ડાઉટ હોય તો જે બી ક્વેરી હોય તો સરને ફ્રીલી પૂછી શકે છે. જો સવાલ તમે આજે પણ પૂછી શકો છો અને તમે અહીંયાના જ છો, લગભગ વધારે પૂરતા તો બધા છે, બરાબર. અને એની ટાઈમ ટોલાણી કોલેજમાં અને મારો નંબર ગૌરવ સાહેબ પાસે છે જ અને તમારા હા ગાઈડ સર, પાસે પણ હશે હું જ, શેર કરી બરાબર. નાખું ને. હા, એટલે તમે ગમે ત્યારે સવાલ પૂછી શકો છો કારણ કે તમારું પેપર સારું હશે તો જ તમારી વેલ્યુ થશે. બાકી પીએચડી તો આગળ પણ ઘણા થઈ ગયા છે અને ઘરે બેઠેલા છે, આપણે એવું ન થવું જોઈએ, એના માટે હું તમને ખાસ થેન્ક યુ. તો હું લીવ થઈ શકું? ઓકે, શ્યોર સર. ઓકે.
પ્લીઝ બધા લીવ થઈ જજો તો હું અહીંયાથી રેકોર્ડિંગ ને સ્ટોપ કરી શકું.